solved it. We calculated initial entropy. Okay, so let me share the screen. Okay. Is the screen visible, everyone? This is when we stopped last time. We constructed a decision tree using ID3. We calculated entropy, and then we calculated information gain, and we solved this one example. Can we recall this, everyone? I guess there should not be any doubt regarding this. Yes, we have not written an algorithm for it. We will write an algorithm. Example solved. Class tell me how many this was the example that we solved. There was 1, 2, 3, 4 variables, 4 features based on what the decision or the label will be played yes or no. And we started with the concept of entropy, what it is, and we finalized कि भाई अगर uncertainty क्या represent करता है, entropy क्या represent करता है, uncertainty. तो अगर अगर सोना ही है या नहीं होना है तो entropy 0 होगा, correct? फिर हमने कहा कि for कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, this was the formula, correct? हमने कहा we need to calculate to the base 10. फिर मैंने आपको steps बताया to the base 10 कैसे solve convert करने का, and this was the formula to calculate entropy. This was the final formula to calculate entropy, correct? मैंने कहा कि एग्जाम में स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, and then we solved it. We calculated initial entropy, okay? And then for every attribute, first we consider output. Now discussing this because this will be a part of the algorithm that we're talking about. सबसे पहले हम आउटपुट के बारे में एक एट्रिब्यूट होगा, हमारा स्टार्ट एट्रिब्यूट है, तो पॉसिबल होगा कि हम पता करने की कौन सा एट्रिब्यूट स्प्लिट एट्रिब्यूट होगा. हमने कहा कौन सा एट्रिब्यूट स्प्लिट एट्रिब्यूट का इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा. तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या है? पहले हमने इनिशियल एंट्रोपी निकाली हमारी, फिर हम आउटपुट के ऊपर इफ यू कैन सी आउटपुट के तीन पॉसिबल वैल्यूज थे, हमने तीनों का एक वेटेड एंट्रोपी निकाला. तो फॉर आउटपुट एंट्रोपी वाज 0.694. फिर हमने आउटपुट का इन्फॉर्मेशन गेन निकाला, ये इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा because I'll be writing the algorithm now. And then we selected temperature as a split attribute. We calculated entropy, weighted entropy, correct? And then we calculated information gain. Similarly for humidity and for wind. Now out of all four, correct, the information gain was highest in outlook. So we took outlook as the first split attribute. हमने outlook हमारा पहला split attribute है, इसका मतलब हमारा सबसे पहला डिसीजन outlook पे होना चाहिए, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा. outlook के तीन पॉसिबल वैल्यूज थे, overcast, sunny and rain. overcast के लिए हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं था. For overcast we had only answer as yes. For sunny there were we were not convinced answer. So हमने फिर छोटा सा डेटा सेट लिया that was purely on sunny. फिर हमने छोटा सा डेटा सेट लिया that was purely on rain. फिर हमने देखा कि यार sunny में सबसे फर्म डिसीजन कहां होना था, humidity पर. जहां भी humidity high है, answer is no. जहां भी humidity normal है, answer is yes. So that was our decision. And on rain the prime factor was the feature on which the decision could be made was wind. Whenever we had wind as b, the answer was yes. And whenever the wind was strong, the answer was no. And so this was our decision tree. Any confusion regarding how to construct a decision tree? This is very important. Examination point of view, आने के बहुत ज्यादा चांस है. इसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है इसमें? Yes. Clear. Okay, चलो. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका algorithm लिखेंगे. फिर हम basic algorithm लिखेंगे, basic algorithm. Okay. Let's start. मैं ऑफ करता हूं. And let's start with session. अब let's write algorithm for it. ये तो भी हमने सॉल्व किया है, हमको उसका algorithm लिखना है. Things will be very clear जैसे हम लिखते हैं. Just one second. So is हमारा algorithm का नाम है generate tree. हर एक चीज ध्यान से देखेंगे. generate tree को हम आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे? generate tree को हम आर्गुमेंट में set of sample पास करेंगे. जो भी मैंने आपको सैंपल दिया था उसका नाम हमने रखा s और हम पास करेंगे attribute list. तो एक करेंगे. सर ये set of sample क्या रहेगा? एक मिनट. Let me have this here. Just give me one second. This mouse is not working. Let us understand the algorithm using this example. तो ठीक है. तो मैं algorithm के साथ बात करूं. तुम्हें सैंपल सेट कितने का 1 2 3 4 5 6 7 ये तो 14 सैंपल्स है, मेरे पास सैंपल सेट है. और एट्रिब्यूट लिस्ट में क्या आएगा? आउटलुक, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. ठीक है. सो मैं सेट ऑफ सैंपल क्या आएगा? मेरे पास सैंपल सेट सारे ऑब्जेक्ट्स. एट्रिब्यूट लिस्ट में क्या आएगा? आउटलुक, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड के एट्रिब्यूट्स. स्टेप नंबर 1 हम क्या बोलेंगे? एक नोट करेंगे. क्रिएट अ नोड एंड second if all samples in S belongs to same class, then if all samples in the S belongs to same class, then क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 हम रिटर्न करेंगे return n as leaf node labeled with class C. तो पहले मुझे समझाइए आप इसे क्या समझा. अभी मैंने लिखा है, प्लीज try to explain me. मैंने लिखा है, मैंने लिखा है एक नोड n बनाइएगा. ठीक है. if all sample in S belongs to same class, now tell me everyone, you have to speak because we need to understand this algorithm. So help me out. क्या मेरे जितने सैंपल है सेम क्लास को बिलोंग करते हैं? Come on tell me. Harder? No, it does not belong to same class. इसका मतलब या तो सारे yes होते हैं या तो सारे no. बराबर? Yes. हाँ, तो अगर हमारे केस में तो सारे सैंपल बिलोंग टू द सेम क्लास. अगर दे बिलोंग टू सेम क्लास तो ये हम लिखते हैं if true. लेकिन अगर नहीं है यानी if true is false, तो हमारा false क्या होगा? if attribute list is empty, then if attribute list is empty, then ये true हुआ तो sorry. Step number 5 is return n as leaf node labeled with the most common class in the set of samples. लेकिन ये false हुआ तो 6. चलो पहले आगे समझिए. चलो और देखो मैंने आपको सैंपल दिया. ये सारी इवेंचुअली ट्रू होंगे. मैंने आपको सैंपल दिया. पहले आई बिलोंग टू सेम क्लास. नो. इसका मतलब नॉट स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 4 is my attribute list empty? Tell me, is my attribute list empty? No, क्योंकि मेरे पास तो attribute outlook, temperature, humidity, wind. मेरा स्टेप नंबर 4 false, यानी मैं कहां जाऊंगा? स्टेप नंबर 5 में 6 में. कौन 6 पे जाऊंगा. यानी अभी जब मेरा एल्गोरिथम चालू होगा तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 चेक करेगा क्या सारे सैंपल सेम क्लास के. नो. तो स्टेप नंबर 3 नहीं होगा. स्टेप नंबर 4 पे चेक करेगा. सॉरी क्या मेरा attribute list empty है? नहीं सर. तो स्टेप नंबर 5 नहीं होगा, वो 6 पे जाएगा. 6 पे क्या चेक करेगा? बोलो. select the attribute So right now in our case, we go to step 6. We will select the attribute with highest information gain as test attribute. I want to understand this better. तो हमारे केस में हमारा टेस्ट एट्रिब्यूट कौन था? तो हमारे केस में हमारा टेस्ट मतलब हमारा स्टार एट्रिब्यूट क्या था? आउटलुक, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन किसका था?
highest information gain किसका था बेटा? हेलो हेलो हेलो, am I not audible? Highest information gain किसका था? हमने सॉल्व किया था ना लास्ट लेक्चर. Of all the four attributes that we had, highest information gain was which attribute? Here. Outlook. Correct? So हम ये देखो किया क्या है इसमें. Please try to understand. So select the attribute at highest information gain as test attribute, and step number 7 will say label the node n with test attribute. इसका मतलब मैंने क्या बोलते हैं? अब देखो ध्यान से. एक नोड n बनाइएगा. एक नोड बनाया मैंने n. अगर सारे सैंपल सेम क्लास के होते हैं, सारे यस होते हैं बेटा. सारे यस होते हैं. तो मैं n क्या होता है? यही लीफ है. लीफ नोड का डिसीजन है बेटा. देखो नॉन लीफ मैंने आपसे बात की थी. इफ यू कैन रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर, मैं जब आपको ट्री की प्रॉपर्टीज बता रहा था, मैंने आपसे बात की थी बेटा. ठीक है. जो लीफ नोड होते हैं वो मेरे लेबल होंगे यानी डिसीजन होंगे और नॉन लीफ हमेशा मेरे एट्रिब्यूट्स होंगे. इफ यू सी द ट्री फाइनल ट्री दैट वी गॉट, प्लीज हैव अ लुक हियर. दिस वाज द फाइनल ट्री. दिस इज अ नॉन लीफ नोड. इट इज एन एट्रिब्यूट. इट इज अ नॉन लीफ नोड. इट इज एन एट्रिब्यूट. इट इज अ नॉन लीफ नोड. इट इज एन एट्रिब्यूट. यस. This is a non-leaf node. It is an attribute. It is a non-leaf होंगे. If you see the tree, final tree that we got, please have a look here. This was the final tree. This is a non-leaf node. It is an attribute. It is a non-leaf node. It is an attribute. It is a non-leaf node. It is an attribute. Yes, it's a leaf node. It's a label. No, it's a label. Yes, it's a label. No, it's a label. Yes, it's a label. Can you understand this? What is happening? मैं पहला एक नोड लूंगा. अब एक बात बताइए बेटा, अगर सारे क्लास का डिसीजन यस है और सारे ही क्लास का डिसीजन नो है, तो फिर मुझे ट्री बनाने की जरूरत नहीं है. वो जो मेरा नोड होगा वही मेरा लेबल होगा, वही मेरा ट्री है कि भाई आप कोई भी पैरामीटर लो, आंसर या तो यस है या तो नो. अगर 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 सारे सैंपल एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे बेटा. Yes. तो इसी को मैं देखो, इफ ऑल द सैंपल इन एस बिलोंग्स टू सेम क्लास, ओके, देन रिटर्न एन एज लीफ नोड लेबल विद क्लास सी. अगर ये सारे यस होते बेटा, ये सारे नो होते तो यही मेरा ट्री है, या तो यस या तो नो, और मैं इसी को रिटर्न कर देता तो यही मेरा ट्री है. यानी तुम कोई भी पैरामीटर की वैल्यू दो, कोई भी एट्रिब्यूट की वैल्यू दो, मेरा आंसर या तो यस है या तो नो है. बराबर कि नहीं? तो स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया? Yes. अच्छा, अगर मेरे पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होते हैं, कोई पैरामीटर ही नहीं है, लेकिन मेरे डिसीजन है वो या तो यस या तो नो है, तो अगर एट्रिब्यूट लिस्ट एम्प्टी हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? अभी मेरा जो लीफ नोड होगा वही डिसीजन होगा बेटा. क्यों? एक बात समझो जरा. मैंने आपसे क्या बोला? एट्रिब्यूट्स आर नॉन लीफ नोड. अगर मेरा एट्रिब्यूट लिस्ट एम्प्टी होता है तो ये जो मैंने एक नोड एन स्टार्ट किया था, करेक्ट, यही लीफ नोड होगा. लेकिन आंसर क्या होगा? मोस्ट कॉमन क्लास इन द टेस्ट ऑफ द सैंपल. मतलब अगर ज्यादा यस है तो आंसर यस है, ज्यादा नो है तो आंसर नो है. अग्रीड? सो अगर ये ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो एन होगा, और यहां पे क्या होगा बेटा? कॉमन बिटवीन यस और नो, जो दोनों में से ज्यादा कॉमन होगा वो यहां पे होगा. तो अगर सारे सारे सैंपल सारे ऑब्जेक्ट एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे तो मेरा जो नोड मैंने स्टार्ट किया है वही लीफ नोड होगा, वही सारे डिसीजन होंगे, और जो मेरा कॉमन क्लास है लेकिन अभी तक क्लास सी, या तो सी यस या तो नो, वो मेरा आंसर होगा. अगर मेरा एट्रिब्यूट लिस्ट एम्प्टी होगा यानी मैं किस बेसिस पे डिसीजन करूंगा वो फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मेरे पास अगेन मेरे पास कोई एट्रिब्यूट्स तो है नहीं, तो मेरे पास कोई नॉन लीफ नोड होंगे नहीं, तो यही जो मेरा नोड है यही मेरा लीफ नोड होगा, और दोनों में से जो कॉमन आंसर है वो यहां होगा. बट हमारे केस में ना ही 2 ट्रू हुआ था ना ही 4. 4 ट्रू नहीं हुआ तो 5 पे गया नहीं. हम आ गए 6 पे. 6 क्या होता है? ओके सर, आपके 6 में आया, 6 में आया इसका मतलब ऑल सैंपल्स आर नॉट फ्रॉम सेम क्लास, आल्सो एट्रिब्यूट लिस्ट इज नॉट एम्प्टी. बराबर ना? 6 में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसका मतलब आपके सारे सैंपल एक ही क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं और आपका एट्रिब्यूट लिस्ट भी एम्प्टी नहीं है. तो आप मुझे जैसे कि हमारे केस में था, तो मुझे क्या करना है? वी विल सेलेक्ट द एट्रिब्यूट हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन. जो हमने सेलेक्ट किया, हमने नाम दिया, वो मेरा एट्रिब्यूट था आउटलुक, और अब मेरा जो नोड n है वो टेस्ट, यानी अब जो मैंने n स्टेप नंबर 1 में बनाया था वो क्या बन गया बेटा? आउटलुक. आई होप यू गॉट दिस. यस और नो? Yes. ओके, तो स्टेप नंबर 7 सबको समझ में आ गया? यस. स्टेप नंबर 8, फॉर ईच नोन वैल्यू इन एट्रिब्यूट a of I of ये a है बेटा, of test attribute do, for each known value of attribute a of I. Now just help me out. What was our attribute outlook? Yes or no? What was our attribute? Yes or outlook? Yes or no? Come on. तो outlook के कितने वैल्यूज थे बेटा? outlook के कितने वैल्यूज थे? सनी, ओवरकास्ट एंड रेन. 3 वैल्यूज थे कि नहीं? 3 वैल्यूज थे कि नहीं? कम ऑन हेल्प मी. Yes. इसका मतलब आपने जिस एट्रिब्यूट हमारा ट्री कैसे बना था, देखो ना, मैंने जब डिसाइड किया कि मेरा आउटलुक क्या होगा बेटा, मेरा इंफॉर्मेशन क्या आउटलुक का है. अब मैंने एक्चुअली देखा जाए तो मेरा जो एट्रिब्यूट आउटलुक था उसके कितने वैल्यूज थे? 3, ओवरकास्ट, सनी एंड रेन. तो देखो मैं फॉर ईच नोन वैल्यू a of I of the test attribute. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखो जरा प्लीज समझो. 8 स्टेप 8 में पॉइंट a, ग्रो अ ब्रांच from n का जो नोड है, such that test attribute is ai. Let b will be, let si be the set of samples such that test attribute is ai. See if si is पूरा don't worry, पूरा समझेगा आपको. empty, then b attach a leaf node labeled with the most common class in s, and he says else attach a node return by recursive call. And what is this recursive call? I can point that function again, generate tree. Hey, what was my main function here? The function name was generate tree. Call. I can point that return by recursive call. And what is this recursive call? I can point that function again, generate tree. Hey, what was my main function here? The function name was generate tree. Again, call the function generate tree.
with SI sample. So SI basically means set of samples and attribute list from test attribute. Let's see. चलो let's see. यहाँ पे तो सब हमको समझ में आ गया. आपने कहा कि label the node n with test attribute. हमने n को दे दिया outlook. अब आपने कहा for each known value of AFI of the test attribute. मेरे test attribute outlook के तीन attribute values हैं sunny, overcast and rain. ये हर value के हम क्या करेंगे? Let's see. क्या होता है? क्या करेंगे? पहला काम क्या होता है? Grow a branch from n such that the test attribute is AFI. चलो तो ये AFI पहली बार sunny होगा. फिर AFI overcast होगा, फिर AFI rain होगा. इतना समझ में आएगा? For each known value AFI of the test attribute. मेरा जो test attribute outlook है उसके तीन AFI होंगे. पहले AFI sunny होगा, फिर AFI overcast होगा, फिर AFI rain होगा. इतना समझा गया? Yes. Just a second. Okay, let's see now. पहला AFI is sunny. So let's focus on sunny. First मैंने क्या बोला? For each value which छह ये हमको 5 स्टेप रिपीट करने हैं. ये फॉर एवरी वैल्यू वी हैव टू रिपीट दिस 5 स्टेप. यस फॉर एवरी AFI. चलो स्टार्ट. पहले AFI sunny होगा. पहले AFI sunny होगा. ये क्या होता है? तो चलो लेट मी गो. तो मैं अभी ये मेरा अब मैं इसको डिलीट करता हूं. ठीक है, ये अभी हो. चलो स्टार्ट. तो पहले AFI क्या होगा मेरा? sunny. तो grow a branch from n such that the test attribute is AFI. अब मेरा टेस्ट एट्रिब्यूट क्या है? sunny. मैंने एक ब्रांच ड्रॉ किया. let s of I be the set of sample. let s of I be the set of sample such that the test attribute is AFI मतलब sunny. तो अब मेरे आउटपुट में जाइएगा और sunny के कितने सैंपल बताइए. मेरे आउटपुट में sunny के कितने सैंपल बेटा? 1 2 3 4 5. तो आप समझो s of I क्या है? s of I वो सारे सैंपल जिसमें sunny है. कैन यू सी दैट? यस वो सारे सैंपल का ऑब्वियसली. ठीक है क्या हमने क्या किया? ठीक है सनी का हमने डायरेक्ट ओवरकास्ट का सनी करो. ये सैंपल हमने डाला 1 2 3 4 5. यस तो ये है सैंपल. ये सारे सैंपल्स हैं जिसमें AFI सनी है. समझा नहीं समझा? आउटलुक के ये सारे सैंपल्स हैं जिसमें वैल्यू सनी है. यू गॉट दिस और नॉट? So we are right now we are talking about this set because we consider this value of the outlook. Yes or no? Yes. Okay चलो. If s of I is empty क्या मेरा सैंपल एम्प्टी है क्या? No. अगर मैं लीफ नोड समझो ये क्या होता? अगर मेरे सैंपल्स होते तो सनी में कोई सैंपल ही नहीं होता. तो ये जो मैं उसी में लीफ नोड बना देता बराबर. सैंपल में से जिसमें मैक्सिमम यस है वो मैं लिख देता बराबर. या जिसमें मैक्सिमम है मैं लिख देता. लेकिन हमारे केस में ये ट्रू है. तो लेकिन हमारे पास सैंपल्स वी हैव सैंपल्स. ध्यान से सुनना. वी हैव सैंपल फॉर एट्रिब्यूट सनी. तो क्या करेंगे आप वहां पे आप वो नोड अटैच करेंगे जो आपको ये फंक्शन रिटर्न करेगा. यानी अब आप यहां से वापस क्या कॉल करेंगे? जनरेट ट्री और उसको पास क्या करेंगे? सैंपल s of I. s of I का पूरा सैंपल जिसमें सनी है बेटा और लिस्ट ऑफ एट्रिब्यूट. कौन कौन से एट्रिब्यूट थे? टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो आउटलुक सनी होने के बाद आपको फिर से ट्री बनाना है. हमने यहां पे फिर से डिसीजन जब हम यहां पे पहुंच गए और मैं वही वापस करना है बेटा. मैंने आपको क्या बताया था? टेक्निकली आपको यहां पे फिर से एंट्रोपी निकालना था. फॉर आउटलुक सनी टेंपरेचर हॉट माइल्ड कूल. फॉर आउटलुक सनी ह्यूमिडिटी हाई नॉर्मल. फॉर आउटलुक सनी विंड वीक स्ट्रांग. आपको फिर से एंट्रोपी निकालना था. फिर से इन्फॉर्मेशन निकालना था. लेकिन मतलब वही प्रोसेस फिर से करना था. लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि वी फाउंड एन एट्रिब्यूट विद द हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन. एंड दैट एट्रिब्यूट ह्यूमिडिटी. Because for humidity we have zero entropy because there was high certainty. Why? Because हमें humidity आता तो जैसे ही high आंसर हुआ जैसे ही normal आंसर जैसे we have very high certainty so there was very low entropy so the information gain will be maximum. Otherwise as per algorithm we have to repeat everything like what we did to determine the outlook. आपको समझ में आएगा? मैंने आपको बोला कि फिर से आप जनरेट को ही कॉल करो. जैसे नेक्स्ट मेरा एट्रिब्यूट होगा रेन. फॉर एट्रिब्यूट रेन टेल मी इज द सैंपल सेट एम्प्टी? नो. सो अगेन इसको पूरा लॉजिक आपको क्या करना था? पूरा लॉजिक वापस ये तीन को यूज करके यस हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन को किसमें मिलेगा? विंड में. तो विंड से वापस ब्रांच निकालेगा. लेकिन जब मेरा AFI ओवरकास्ट हो
जब मेरा EO5 ओवरकास्ट होगा, आप ध्यान से सुनना, मेरा EO5 ओवरकास्ट होगा, फिर से मैं जनरेट को कॉल करूंगा, फिर से जनरेट रिचार्ज करेगा, ये आउटपुट आउटपुट में there will be a point when EO5 will be overcast. All sample belongs to same class. All sample belongs to same class. तो क्या करेंगे? That itself will be the Leaf. नहीं समझा, समझ गए? एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? I hope I'm getting very clear. Yes. Good. So this was the algorithm. तो यही बात पता चलेगा. So इसमें पहले आप एक नोट बनाइएगा, चेक कीजिए अगर सारे सैंपल एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो जो नोड है वही नोड होगा और उस नोड पे क्या आएगा उस क्लास का नाम. अगर सारे सैंपल सेम क्लास को नहीं बिलोंग करते हैं तो एट्रिब्यूट चेक कर लीजिए. ठीक है, क्या जाएगा? अगर एट्रिब्यूट एम्प्टी है इसका मतलब मैं मैक्सिमम जो भी मेरा लेबल है उस लेबल को नहीं हटा दूंगा, ये भी मेरा लीफ होगा. अगर मेरा एट्रिब्यूट एम्प्टी नहीं है, मेरे सारे सैंपल एक ही क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, इसका मतलब वो नॉन लीफ नोड है. अब मैं उस एट्रिब्यूट के नाम से एट्रिब्यूट को टेस्ट एट्रिब्यूट तो मैं सबसे पहले एट्रिब्यूट ढूंढूंगा जिसमें हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन है, वही एट्रिब्यूट मेरा टेस्ट एट्रिब्यूट होगा, नोड को मैं वही नाम दूंगा. अब उस एट्रिब्यूट के जितने भी वैल्यूज हैं, हमारे केस में हमारा एट्रिब्यूट था आउटलुक, फिर हम था आउटलुक को जितने भी वैल्यूज होंगे उसके लिए हम फिर से चेक करेंगे, एक ब्रांच बनाएंगे, उस एट्रिब्यूट के सारे सैंपल लेंगे, अगर वो एम्प्टी हो गया तो उसको ही लीफ बोलेंगे, अगर वो एम्प्टी नहीं है यानी उस एट्रिब्यूट में सैंपल्स हैं तो हम फिर से जनरेट फंक्शन कॉल करेंगे. आई होप मैंने इसको शॉर्ट में प्रॉपर्ली आपको समझ में आया होगा. मैंने एग्जांपल के लिए लास्ट वीक ही लिया था. यस बेटा, कोई कंफ्यूजन बताइए, बोलना बताइए. यस और नो. आउटपुट के तीनों जब ये देखिए ना, हमने जो सैंपल लिया हमने यहाँ लिया ना, आउटलुक ओवरकास्ट के सबके सैंपल ऐसे नहीं लिखा, मैंने आउटलुक नहीं मेरे सैंपल से किया. हाँ यस. एक्चुअली मुझे फिर से एंड्रॉइड कैलकुलेट करना था और मैंने आपको स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क में समझ आया कि भाई ये एक्चुअली ये जो सैंपल है सनी और रेन के मुझे वही ऊपर वाले से करने थे. ऊपर हमने 4 एट्रिब्यूट्स क्लियर किए थे नहीं. Yes. तो नाउ यू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव डन फॉर आउटलुक सनी, 3 एट्रिब्यूट के एंट्रोपी कैलकुलेट करना. Yes. बट मेरे को समझ में आया कि ह्यूमिडिटी विद द लीस्ट एंट्रोपी सो हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन. हाँ करेक्ट. व्हाट इज इन्फॉर्मेशन गेन का पुराना एंट्रोपी माइनस द एंट्रोपी ऑफ द एट्रिब्यूट, बराबर. हाँ. जब एंट्रोपी ऑफ द एट्रिब्यूट 0 होगा तो मैक्सिमम डिफरेंस आएगा ना. Yes मैक्सिमम गेन. हां, तो हमको ये मैंने आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि एग्जामिनर 10 मिनट लगेगा. आप इसको ये घंटे से करना चाहिए तो वो थोड़े स्मार्ट सैंपल्स देते हैं, वो ये देखना कि बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं. बच्चे जाएगा एक बार स्कैन करेगा, मैंने आपको हॉट के लिए नो माइल्ड के लिए नो, सो आई कैन टेक डिसीजन हॉट के लिए नो माइल्ड के लिए नो. सो टेंपरेचर तो मैं ये देखूंगा 0 एंट्रोपी है, बराबर. अगर हॉट के लिए नो है माइल्ड के लिए नो है तो एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैं ले लूंगा वीक के लिए नो स्ट्रांग के लिए नो, इसका मतलब मुझे 0 एंट्रोपी नहीं दे रहा है. आई के लिए नो आई के लिए नो आई के लिए नो नॉर्मल के लिए यस नॉट, ये मुझे 0 एंट्रोपी दे रहा है तो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम गेन देगा. कैन अंडरस्टैंड प्रोसेस. Yes. सिमिलरली आई कैसे करना चाहिए था, एंट्रोपी फॉर आउटलुक इक्वल टू रेन एंड टेंपरेचर. समझे? ऐसे तीनों 1 2 3 आउटलुक रेन एंड ह्यूमिडिटी, आउटलुक रेन एंड विंड. और जब टेंपरेचर मुझे माइल्ड और कोल्ड वैल्यू मिलता है, मैं इनका वेटेड एंट्रोपी निकालता क्योंकि टेंपरेचर के दो वैल्यूज हैं. आउटलुक रेन और टेंपरेचर कितना वैल्यू बेटा? माइल्ड एंड कूल. आउटलुक रेन और टेंपरेचर कितने सैंपल्स हैं? 5. उसमें से माइल्ड कितना है? 3. कूल कितना है? 2. अच्छा 3 माइल्ड है, 3 माइल्ड पे यस कितना है? 2 यस 1 नो. कैन यू अंडरस्टैंड? Yes sir. कूल में 8 यस 1 नो. तो आउटलुक रेन टेंपरेचर का मैं निकालूंगा, वेटेड माइल्ड और कूल का वेटेड एंट्रोपी निकालूंगा. इसका मतलब वही जो जनरेट हुआ है फिर से इंप्लीमेंट करूंगा रिकर्सिवली. तो देखो मैं अपने कैसे करूंगा, माइल्ड पे यस है, कूल पे यस है, इसका मतलब टेंपरेचर विल नॉट गिव मी 0 एंट्रोपी. Yes. ह्यूमिडिटी हाई पे यस है, नॉर्मल पे यस है, इसका मतलब दो अलग वैल्यू यस है. क्या 0 एंट्रोपी देगा? क्या 0 एंट्रोपी देगा? नो. विंड वीक पे यस है, वीक पे यस है, स्ट्रांग पे नो है, वीक पे यस है, स्ट्रांग पे नो है, तो क्या विंड 0 एंट्रोपी देगा? Yes sir. Yes, तो आंसर 0 एंट्रोपी का हाईएस्ट गेन. आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई मेक. सो द पॉइंट इज कि अगर एट्रिब्यूट के उस वैल्यू के लिए मेरे पास सैंपल है तो मैं फिर से कैसे कॉल करूंगा जनरेट के लिए. समझा क्या समझा? ठीक है, प्रोसेस करेंगे बेटा. एट्रिब्यूट का हो गया, आउटपुट एट्रिब्यूट नहीं है ना, सही नहीं चेक करो आउटपुट एट्रिब्यूट क्या. नहीं. एग्जैक्टली. कभी बात देखो कोई कंफ्यूजन है एल्गोरिथम में तो तुम कुछ नहीं करो. डोंट राइट इट. आप इसमें जाओगे मैप का. यस. Then I can go with the next algorithm convert it. Yes. 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 No. So I can go. Yeah, this is yes. This is algorithm. मैं फंक्शन का जनरेट. आई रेडी? चलिए. ओके. चलिए. इतना प्रॉब्लम स्कैन कर देखो कि सब आपको समझ में समझ आ रहा है. कोई ऐसी चीज नहीं समझ आ रही है. Please write first and let me know this problem. First problem. See, now you can tell me set of samples for this. And attribute is underscore test attribute. मतलब test minus test attribute. आपके attribute में से कौन सा attribute मिलना चाहिए? जो test attribute को माइनस होना चाहिए, बराबर? Attribute is minus test attribute. Yes. तो आपके केस में यहाँ आउटपुट माइनस होना चाहिए. This is how it should be. ठीक है सबने? Go ahead. तो इसमें ready? बराबर बहुत बड़ा किया भाई. ठीक है ना? Okay, चलो. So let's talk about nearby. चलो इसके कॉन्सेप्ट लेते हैं. कंसीडर. चलो यहाँ पर बचपन से पढ़े हो. समझो मेरे पास एक बैग वन है. बैग वन में दो रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू बॉल्स हैं. और बैग टू में भी है 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू और ब्लैक बॉल्स. ठीक है. My question is one ball is drawn from one of the bag. What is probability that it is red? चलो पहले आंसर क्या था? मेरे पास दो बैग है. एक में 2 रेड बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है, बैग टू. बैग टू में भी है 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स. My question is one ball is drawn from one of the bag. What is the probability that it is red? कौन सा आंसर दो? Come on.
एक्टिव स्टूडेंट चाहिए, तो बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स का फटाफट करूंगा, हेल्प करो मेरी, आंसर क्या आएगा? अब ये बताओ, तुम नहीं पढ़ पाऊंगा आगे, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए आप लोग प्लीज। यस, कौन तुम नहीं आया? व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए आंसर? यस, 0.4. 0 पॉइंट, मेरे को बताओ ना, कैसे कैलकुलेट किया? What is the probability that 0.5 into yes, probability one of the right? So back one से draw की probability half है, back two से draw की probability half है, क्योंकि इसी back से करनी है, अगर back one से draw किया, क्या back one है? What is the probability that one ball will be drawn from back one? What is the probability that one ball will be drawn from back two? X one back two. Now what is the probability that one ball drawn from back one will be right? So 2/5 and here 4%. 4/7 we get some value. And what is the value now? 0.4. Whatever. So मेरे question is not, अब मेरा question क्या है? If asked ball drawn is red, बॉल अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मैं एक बॉल ड्रॉ करूंगा और वो बॉल की प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए और वो एक बैट्समैन ड्रॉ करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? इफ आस्क्ड बॉल ड्रॉन इज रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैक वन। हां, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है? आपको बताया गया है कि वो बॉल हमने ड्रॉ किया हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बैक वन से ड्रॉ किया। इसको हम समझें, y given x, व्हाट इज ये गिवन है? गिवन क्या है? बॉल ड्रॉन इज रेड, आपको दिया है, व्हाट इज y? इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैक वन। चलो इसका क्या आंसर होगा? सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैक वन? ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक वन। Okay. So what is the probability that the red ball drawn is from bag one will be probability that a red ball is drawn from bag one into probability that that is bag one and क्या होगा? Probability that ball is red. Now यहाँ पे जो decision y है वो एक x पर रहेगा. Here y it is the decision based on single x. But अगर मैंने आपसे कहा हमारे केस में क्या होता है? हमारा जो y है वो x1, x2, x3, xn. There are many features. There are many features. तो ये क्या बन गया? Given these features, this is the label. Can you understand? ये क्या कहता है? It is probability of given features or attributes जो लिखा as x1, x2, xn. What is probability of given feature? Then y is y. Output is y. ये कैसे होगा? अब ये स्टेप चलेगा. It is probability of y given x, probability of x given y. अच्छा, probability of y and probability of x कितना है? उसी तरह से देखूं मैं यहाँ पे. Probability of x by y. यहाँ x x x n. Can we get probability of x1 given y into probability of x2 given y into probability of xn given y into p of y. जो है नीचे का p of x. यहाँ x का x1 x3. Can we p of x1, p of x2, p of x3. ये अपनी इम्पोर्टेंट है. ये दोनों इम्पोर्टेंट है. तो p of y given x will be p of x given y into p of y on p of x. ये जो गिवन मिल जाएगा. ये जो मिल जाएगा. y by x तो x by y. Similarly here. I wish please note these two. Very important. Fast. तो x1 x3 मिल गया ना? हाँ बेटा, मैं प्रोबेबिलिटी लाने बता रहा हूँ, दोनों ये दोनों। ओके, ध्यान रखिए। अब before going everything else, let me dig detail into probabilities. Can I go ahead? Yes. Okay, so थोड़ा सा तुमको क्या आएगा? Types of probability. कितना है प्रॉब्लम? ट्रायल, उसके लिए जिसको हम कंडीशनल भी कहते हैं, और क्या बेटा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा एक एग्जांपल के साथ। लेट्स से x and y 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 and 1 1। ठीक है, अब कुछ प्रोबेबिलिटी में एग्जांपल इसको एग्जांपल नोट करने के लिए मैंने एग्जांपल नहीं है, नेचुरली दियो। नाउ p of y equal to 1, ये क्या है आपको? ये पैरा प्रोबेबिलिटी है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y equal to 1? पता क्या आंसर आएगा? What is the probability that y equal to 1? 4/6. 4/6, simple. Now if I say what is the probability that x equals to 1? 4/6, इनको हम ट्रायल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा इसका मतलब क्या होगा? What is the probability that y equal to 1 given x equal to 1? इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? क्या बोलो, आंसर क्या है? What is the probability that y equal to 1 given x equal to 1? x1 कितनी बार है? x1 कितनी बार है? बोलो, चार बार। y1 कितनी बार है? जब x1 है तो y1 कितनी बार है? x1 है, y1 एक बार। x1 है, y1 एक बार। समझे? इसको हमने पोस्ट क्लियर और कंडीशनल समझा है? अब आपके मैं बताता हूं। What do you mean by this? Probability that x and y both are 1. बोलो, x and y both are 1. In how many samples? 2 out of 6. Correct? इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये मेरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। यस, तो चलो मैं प्रोबेबिलिटी का बात करते हैं। अब मैं आता हूं आपको ये क्लियर हो गया। फॉर्मूला याद रहेगा, y given x will be x given y into y upon x, y given x will be x given y into y upon x, y given x will be x given y to y upon x, and if x is the exponent then this is probability. Okay, name bias and next probability. Are you okay with this? So now you will be comfortable when I start with name bias classifier. Agreed? Then like note. So now let's go ahead with name bias classifier. ये important. Name bias. After decision tree classifier, this is the second classifier that we are talking about. After decision tree classifier, this is the second classifier we are talking about, name bias. ये क्या देता है? It gives statistical approach to classification. ये क्या कैलकुलेट करता है? It calculates class membership probabilities. क्या कैलकुलेट करता है? क्लास मेंबरशिप प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल, अगर मैंने कहा x इज अननोन सैंपल, मतलब x का एक टपल है, उसने बहुत सारे एट्रिब्यूट a1 a2 a3 इनके वैल्यूज है, a4 ऐसे चार एट्रिब्यूट के वैल्यू है, बट दोनों का क्लास।
we don't know label हम ये पता नहीं कौन से लेबल जाएगा कौन सी क्लास जाएगा ठीक है तो क्या होता है x is an unknown sample x is an unknown sample का मतलब वही पता नहीं जहां पे मुझे एट्रिब्यूट की वैल्यू पता है कि कौन से लेबल को कौन सी क्लास को बिलोंग करता है मुझे पता नहीं है तो x is an unknown sample and there are three possible classes C1 C2 C3 मतलब x can belong to C1 और x can belong to C2 और x can belong to C3 तो there are three possible classes तो मैंने ये क्लासिफाई करेगा क्या this classifier calculates probability that x belongs to class C1 BP1 probability that x belongs to C2 BP2 and probability that x belongs to C3 BP3 इसका मतलब मैंने आपको बताया मुझे पता नहीं x कौन सी क्लास को बिलोंग करता है ठीक है एक्शन सैंपल पर मुझे ये पता है कि मेरे पास पॉसिबल क्लासेस है C1 C2 C3 जैसे अगर मेरा क्लास yes और no है मेरे पास पॉसिबल क्लासेस है yes no दो क्लासेस अब मुझे पता करना है कि x किसको बिलोंग करेगा भाई x तीन में से किसी क्लास को बिलोंग करेगा सो नेम क्लासिफायर क्या बताएगा मुझे तीनों क्लास की बिलोंग करेगी मेरे को प्रोबेबिलिटी बताएगा वो क्या करेगा कि भाई आपका जो x है वो क्लास C को बिलोंग करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है आपका जो x है वो C3 को बिलोंग करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 3 है और जो आपका x है वो C1 को बिलोंग करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है तो तीनों क्लासेस को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी निकालेगा नाउ amongst P1 P2 and P3 what is P1 probability that x belongs to class C1 what is P2 probability that x belongs to class C2 what is P3 probability that x belongs to class C3 ये तीनों प्रोबेबिलिटी में let's say P2 is highest then this sample x will be declared to belong to class C2 तो तीनों में अगर सबसे बड़ा P2 है इसका मतलब probability of the x belongs to C2 is P2 and it is highest तो हम डिक्लेयर करेंगे my x belongs to class C2 so how do we represent it mathematically I represent it mathematically like this unknown object x is assigned to the class CR if and only if probability of x what it means probability of x belonging to class CI is greater than probability of x belonging to class CJ for all set of classes for all class from 1 to n there are m classes और when I is not equal to ये क्या होता है इमेजिन करो मेरे पास m classes हैं ठीक है तो जिस भी क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी probability of x belonging to particular class is highest then that class will be declared is this clear सब ऑप्शन ऑफ देखिए क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको दो दिया है CI and J जस्ट मैंने आपको दो क्लास है CI and CJ बराबर जैसे मैंने कहा मेरे पास तीन क्लास है C1 C2 C3 ओके मैंने कहा मेरे पास दो क्लास है CI and CJ and class and the sample x none object x can either belong to CI or either belong to CJ तो आंसर क्या होगा मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x what is the probability of x belonging to class CI and what is the probability x belonging to class CJ ये दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी x उस क्लास को बिलोंग करेगा agreed or not अब मैंने तो दो क्लास लेकर m सब क्लासेस तो we need to find for every pair I and J that belongs to m set of classes मैंने क्लास तो 1 2 2 3 सबका कंपेयर किया जाएगा और मुझे सबसे ज्यादा होगा उसकी समझा यस एक कंफ्यूजन मैंने क्या किया बेटा मैंने आपको दो क्लास दिया अगर CI और CJ दो क्लास है और x को CI बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी और x को CJ बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा है मेरा x उस क्लास को बिलोंग करेगा नाउ लेट देयर बी m classes so we will check for all m classes yes यस okay now ये तो नहीं बाय इसमें लिख सकते हैं let there be an unknown class sample x now this unknown sample x will have certain attributes attribute a1 a2 ये कौन से a3 a4 a10 बराबर और a1 का कोई attribute है x1 a2 का कोई वैल्यू है x2 a3 का कोई वैल्यू है x3 these are x these are value of the attributes these are attributes and this is unknown sample now let the probability p1 that x belongs to c1 let the probability p2 that x belongs to c2 let the probability p3 that x belongs to c3 let the probability pm that x belongs to class cm there are m classes कितना समझ गया आपको अरे देखिए जैसे एक सैंपल है एट्रिब्यूट आउटपुट एट्रिब्यूट है आउटपुट क्या वैल्यू हो सकते हैं मैंने x1 को ये वैल्यू पढ़ लिया कैन यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल मैं आपको दूं एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कोई एट्रिब्यूट है समझो आउटलुक आउटलुक का x1 है आउटलुक इज सनी और आउटलुक इज ओवरकास्ट कैन यू अंडरस्टैंड दिस समझो इट इज टेंपरेचर तो x2 कैन बी व्हाट और कोल्ड व्हाटएवर समझा तो यहां कैसे लिखेंगे probability of x calculated over combination जैसे एग्जांपल let's see this अगर मैंने आपको कहा कि एग्जांपल देखिए अगर मैंने आपसे कहा probability of y given outlook is sunny wind का क्या मतलब पॉसिबल कोई पॉसिबल विंड का समझ गया let let's suppose wind is strong humidity is high and temperature is hot समझा तो what is x1 x1 is in my sample I want to know given outlook is sunny wind is strong humidity is high temperature is hot what will be the probability that answer will be yes and what is the probability that answer will be no can you understand what is trying to say beta hello can you understand so मुझे क्या लगेगा what is the probability that given the answer is let me say probability for yes for all those value so what is the probability that answer is yes and outlook is sunny into what is the probability that answer is yes and wind is strong what is the probability that answer is yes and humidity is high can you figure it out what is happening क्या आपको समझ में आ रहा है यस good so that's what it is saying कि probability मैं क्या कर रहा हूं I'm calculating the probability what I'm doing is just understand I'm calculating the probability over combination of values of different x1 x2 x3 now x1 is outlook is sunny x2 is wind is strong so I'm calculating the probability over all these values so that's what the device does the probability of x calculated over combination of values of x1 x2 x3 xn is it clear yes or no overcome and calculated independently for each attribute ठीक है attribute आपने भाई probability of outlook sunny and yes probability of wind strong and yes independently to one another taking one attribute at a time इसको क्या होता है known as class conditional independence इसको हम कहते हैं class conditional independence क्यों क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि जब आप क्लास yes निकाल रहे हो फॉर sunny आप सेपरेट निकाल रहे हो क्लास yes फॉर wind strong आप सेपरेट निकाल रहे हो क्लास yes फॉर humidity आप सेपरेट निकाल रहे हो एक बार में एक ही एट्रिब्यूट के वैल्यू के ऊपर ओके लेट्स लेट मी let's explain this इसको क्लास कंडीशनल इंडेक्स में क्या होगा आप एक बार में एक एट्रिब्यूट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो बाय ओनली कंसीडरिंग वन एट्रिब्यूट क्लास कंडीशनल चलो प्लीज राइट दिस आप इसे लिखो एक पूरा लिखो चलो फास्ट बिकॉज़ वी नीड टू सॉल्व एग्जांपल नाउ प्लीज राइट दिस नेम बाय क्लासिफायर
So y is probability that given class x, y is the sample into probability of y upon probability of x. So can we write C of what is the probability that x belongs to class Ci will be probability of Ci into probability of Ci upon probability of x. Yeah, and please write this. Just write this. And we will solve an example. What is P of C of I? What is probability that class is I? It is total number of samples. And number of samples of class Ci. Again, calculating P of x given Ci. Is calculating it is P of x1 given Ci, P of x2 given Ci, P of x10 given Ci. So ये मैं आपको करने में सोचा वापस से ओके पहले यहाँ से शुरू करो नहीं बस ठीक है ओके लेट मी मूव टेक द स्क्रीनशॉट ओके टेक द स्क्रीनशॉट ओके टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चलो लेट्स सॉल्व समथिंग चलो लेट मी समथिंग गिव यू एन क्वेश्चन which class X is most likely to be? Please note the question, everyone, and then we can answer the question. This is comparatively easier. Please note the question, and we'll solve it together. चलो let's solve. अच्छा क्या करेगा? मुझे क्या करना है? मुझे कितने क्लासेस पॉसिबल है? How many classes are possible? या तो the fruit with color red and shape round. या तो वो एप्पल होगा, या तो वो चेरी होगा, या तो वो पीच होगा. Yes or no? Come on. मैं आपको क्या करना? Let this be class C1, let this be class C2, let this be class C3. I want to find X belongs to which class? So we will calculate X belongs to C1, probability we will calculate, probability of X belonging to C2, we will calculate probability of X belonging to C3. तीनों में से जिसका maximum होगा, वो मेरा class होगा. Can you understand this? So we calculate the probability of X belonging to apple. We calculate the probability of X belonging to cherry. We will calculate the probability of X belonging to peach. तीनों में से जिसकी probability ज़्यादा होगी मेरा आंसर होगा. Agree? अभी हाँ हाँ ओके तो फटाफट आंसर कर दिया छोड़ दिया तो स्टेप 1 क्या सुन रहे हो लेट्स अज्यूम x is apple y is apple लेट्स अज्यूम y is apple y belongs to class apple तो उसका क्या हो गया apple हो गया तो मुझे निकालना है ये निकालना probability of x belonging to class apple अरे हाँ ना probability of x belongs to class ci यहाँ पे ci का apple कैसे निकालेंगे नहीं वैसे probability of ci by x it is p of x given ci into p of ci upon p of x agreed or not Yes. So what is probability? What is probability that? What is probability that given shape is given fruit is apple and color is red and shape is round? इसका मतलब क्या है? No. देखो ये कैलकुलेट करना है. Correct. इसका मतलब क्या है? What is p of x given ci का मतलब? What is probability that fruit is apple and color is red and shape is round? समझा? Two attribute beginning. Color और shape two attribute beginning. Yes. मैं देख सकता हूँ the probability of what? Color equal to Probability that color equal to red given fruit is apple. बराबर ना? Into probability that shape equals to round given fruit is apple. समझ आया ना? I want to find what is the probability that fruit is apple color is red shape is round. So the probability of fruit is apple color is red into probability of fruit is apple shape is round. So fruit is apple. Apple कितने fruit है? Fruit कितने fruit है? Fruit कितने fruit है? 25. उसका probability है? 25. So this probability will be 25 upon 35. And fruit is apple shape is round. Fruit is apple shape is round is 20. So this will be 20 upon 35. You get some value. So P of x मिलेगा. So ये मिलेगा. P of c चाहिए. P of c what is probability that class is apple? Class of fruit. So इसका what is the probability that fruit is apple? What is the probability that? Hello? Out of 100 fruit how many fruits are apple? 35. Exactly बेटा. P of c मिलेगा. Now what is P of x? P of x मतलब probability that fruit has color red and shape round. So that will be probability of fruit color red into probability of fruit shape round. Okay. So what is the probability of fruit color red? 5800. And now 5200. 51. Fantastic. Very good. 58 upon 100 into 52 upon 100. So starting around 0.35 का हाँ प्लस 0.35 चलेगा इसका शायद 0.40 आएगा इसका 0.35 दिखता है बच्चा और इसका क्या आएगा 0.3016. So what is the probability of y is apple? The probability that class is apple given x क्या आएगा 0.408. So 0.57. ये वाला 25 and 25. Yes, 0.57. Okay, sure. Let me check again. 25 divided by I guess 0.08. अरे वाला मेरे को ये ऐसा बड़ा सॉल्व करते हैं शायद मैं कर सकता हूं बट चलो मैं करता नहीं हूं चलो धन्यवाद इसका क्या है प्रोडक्ट into 0.35 upon 0.3016 we get 0.470. So given the x the probability that it will belong to class apple is 4.473. समझा कि नहीं समझा एक बार let's assume class apple. Okay now so starting वाली फिर वापस नेक्स्ट स्टेप करना है. Let's assume y is cherry फिर क्या है let's assume y is peach ये तीनों वेरिएबल को बराबर ये क्या सॉल्व करना बोल रहा हूं कोई ना कब पूछो फिर को बात करनी cherry given x that will be probability of x given class ci equals to cherry into probability of class ci equals to cherry
upon probability of x. ये मुझे निकालना है. Next मुझे निकालना है probability of class equals to peach given x. That will be probability of x given class equals to peach into probability of class equals to peach upon p of x. ये तीनों में क्या लिखा है? ये तीनों में कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट आंसर किया जाएगा? p of x. अभी तो सिंपल है. अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ. p of x एक करके बाहर निकल रहा है? नहीं है. बराबर ना? समझ में आ गया? तीनों में सिंगल p of x और जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है which is 0.3016. ये थ्रू आउट द सेम रहेगा बिकॉज़ कलर रेड और शेड इज राउंड. इसकी प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट सेम रहने वाली है. ठीक है? तो वाली बात कैलकुलेट करें. मतलब ये स्टेप 2 है. चलो, what is probability of x given ci equals to chai? 20 by 30 है. Okay, what is probability of class equals to chai? 30 by 0. 30 by 0.3. Probability of class equals to cherry given x. 0.61. 0.61. Okay. I want to verify. Step 3. Probability of class equal to peach given x. That will be x given class equals to peach into p of class equals to peach upon p of x. Okay. Ci. It is product of all I from 1 to m where there are n attributes or n attributes. That is p of x I upon ci. अब समझ आया? x है. What is here? x is outlook temperature humidity. तो मैंने outlook NS, humidity NS. Temperature NS, wind NS. P of humidity is normal and class is yes. Are you getting? You're not confused. China. Wind is strong and class is yes. तो ये क्या है? First part 2/5. 2/5 yes टोटल नहीं है. क्लास इज यस. नॉट यस नहीं हो नहीं सकता. अगर आप नॉट यस नो है. निकाला. आउटलुक सनी में क्लास यस. टोटल नॉट यस में से सनी कितना है? दो बार. समझा? Yes, yes. देखा देखा. सनी नो ये नहीं चलेगा. सनी नो नहीं चलेगा. सनी नो नहीं चलेगा. सनी यस एंड सनी यस. So out of total 9 yes, it has sunny only 2 times. Out of total yes, temperature cool is only 9. 3/9. Yes. Out of total yes, wind is normal 6 times. Out of total yes, wind is strong 3 times. So what is P? Class is yes given x is 2/9 into 3/9 into 6/9 into 3/9 and that will give you a certain value. Correct? So मुझे मिल गया. P of c है. What is P of c? Probability class is yes 9/4. And what is P of x? P of x कितना है? 0.0218. तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लास इज x. अब क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट ये नहीं आंसर है. हमको अभी एप्लीकेशन डालना चाहिए. नहीं डाला था. हम इससे प्रोबेबिलिटी फॉर x i given class is yes. ये डाला. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास इज yes. ये करते हैं. समझ गया? सर क्लास यस. आप बोलें सर 9/14 14 है. हम लोग लगाना चाह. 9/14 और कितना हो गया? 0.49. 0 इसका 0.49 का 0.49 into नहीं, इसका आंसर 0.49. 9/14. अच्छा फाइनल आंसर. इसका आंसर ठीक है. उसका 0.016. अपना आंसर 0.1 0.49 is the answer. 0.49. ये किसके लिए निकालेगा? यस यस. तो स्टेप क्या होगा? P of class equal to given x. Yes. That will be p of x given class equals to no into p of class equals to no upon p of x. Now p of x given class equals to no will be p of outlook equals to sunny given class is no. So now into p of temperature equals to cool given class is no into p of humidity equals to normal given class is no. अब क्या करेंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं. Wind equals to strong given class is no. तो क्या आएगा? ये क्या आएगा? 1 2 3 4. डेल्टा क्या आएगा? 3/5. sunny temperature का आएगा 1/5. normal humidity का आएगा चेक करो 1/5. wind strong का आएगा 3/5. या जाएगा 9/625. probability of class 0.0144. तो क्या आएगा? 0.014 Yes. चलो ठीक. probability of क्या है? 5 14 है. and probability of x हमने कैलकुलेट किया होगा. that was 0.0218. so what is p of class equals to no given x will be 0.0144 into 5/14 upon 0.0218. and the answer is 0.24. 0.24. so इसका no probability 0.24 है और yes का 0.49 है. तो what's the answer? probability of class equals to yes given x is 0.49 greater than probability of class equals to no given x which is 0.24. therefore answer is very equal to yes. चलो स्टार्ट करें. स्टेप 2 की समझ क्या है? Sorted? आपने लोग है. ये पण सबको आया. स्टेप 1 लेंगे. स्टेप 1. स्टेप 2. Are you sure with your answer? Yes? Everybody is okay? So yeah? Okay. I guess everyone understood what we did on your also. Classify. So using this, so we have tried 2 ways. So we did using decision tree and we did that. We did this classification using your I hope everyone is okay. Yes? So let's start the session. We'll meet next Tuesday in the morning 10 a.m. So we'll leave by 12. So that में गणपति विसर्जन जाना भी है. So 12 के बाद नहीं जाएगा. तो आप घूम सकते हो शाम को. ठीक है? चलो. Have a nice day. मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ. ठीक है? Okay, so in the last session that we discussed, हमने कौन सा एल्गोरिथम शुरू किया था? Last session में we started with name as classifier, correct? And ये पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल मैंने सॉल्व किया. And then if you can recollect, we started with this example. मैंने आपको बोला था आप उसको खत्म कीजिएगा. आपको इसका आंसर मिला क्या बेटा? You got this answer, everyone? यहाँ पे हमारे पास दो ही एक्सपेक्टेड क्लास थे, yes and no. Kindly let me know. यहाँ पे क्लियर हो गया कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो एग्जांपल में?
Yes. Now, so what we have seen in last two classes. पहले एग्जांपल में हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर देखा, फिर दूसरे में सर आपने हमको नेम बेस्ड क्लासिफायर बताया. लेकिन आपको नोट्स. ओके. सर पहले लेक्चर में आपने मतलब प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट डिसीजन ट्री क्लासिफायर एंड द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट नेम बेस्ड क्लासिफायर. ये दोनों इंडिविजुअल प्रोसेस थे. ये दोनों क्या करता है? इंडिविजुअल मैकेनिज्म थे हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए, आंसर प्रेडिक्ट करने के लिए. नाउ लेकिन हम क्या करते हैं ऐसा हो सकता है. देखो वी टॉक्ड अबाउट, हमने दो चीजों के बारे में बात की बेटा. एक डिसीजन ट्री के बारे में बात की, दैट वाज माय डिसीजन ट्री क्लासिफायर, एंड सेकंड वाज नेम बेस्ड क्लासिफायर. ऐसे भी और भी बहुत सारे क्लासिफायर हैं बट वो आपके सिलेबस में नहीं. ठीक है. नाउ पॉसिबल है, सी पॉसिबल ये है बेटा कि ये दोनों अलग अलग रिजल्ट है. पॉसिबल दैट दे गिव डिफरेंट रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर टेस्ट सेट. ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट सेट के डिसीजन ट्री क्लासिफायर ने आंसर यस दे दिया हो और किसी पर्टिकुलर टेस्ट सेट के नेम बेस्ड क्लासिफायर ने आंसर नो दे दिया हो. मतलब क्या है? मतलब ये है कि डिफरेंट क्लासिफायर्स मे गिव डिफरेंट रिजल्ट. अलग-अलग क्लासिफायर अलग-अलग रिजल्ट दे सकते हैं. बेटा ये जो एक डिसीजन ट्री हमने बनाया है या हमने ये एक डिसीजन ट्री बनाया जहां हमने सारे फीचर्स सेलेक्ट किए थे. इफ यू कैन रिकॉल, यही एग्जांपल हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर से भी सॉल्व किया था. इफ यू कैन रिकॉल, यही एग्जांपल हमने डिसीजन ट्री क्लासिफायर से भी सॉल्व किया था. हमारे फीचर्स क्या था? आउटलुक, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. ये चारों फीचर लेके हमने डिसीजन ट्री बनाया था. नाउ फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, जब आप सेशन 7 में जाएंगे आप मशीन लर्निंग पढ़ेंगे. फ्यूचर में जब आप सेशन 7 में जाएंगे मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, वहां कोई टॉपिक आ जाएगा जिसको कहते हैं ensemble learning. Ensemble learning. There is something called as ensemble learning. Now what is ensemble learning? नॉर्मली क्या होता है बेटा? ये भी आपके एग्जाम में आएगा, मैं थोड़ा आपको नोट के लिए दे रहा हूं. ensemble learning क्या है? सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है. मेरे पास कितने फीचर है? फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4. ये चार फीचर है और उसके ऊपर मैंने डिसीजन बनाया हुआ है. सो डिसीजन ट्री क्या कहता है बेटा? डिसीजन ट्री ये सारे फीचर यूज करता है. फीचर 1, फीचर 2, decision tree मैंने निकाला. ठीक है. देन वी हैव some feature 3, then some feature 4, and then you have your leaf. Moral of the story is in decision tree there is a single tree. एक सिंगल ट्री हम जनरेट करते हैं और उस सिंगल ट्री से हम कहते हैं कि तुम मेरा प्रेडिक्शन कर दो कि आंसर जो भी क्लास को बिलोंग करता है वो क्लास रिप्रेजेंट करो. करेक्ट है. नाउ ensemble learning क्या कहता है? आप एक छोटा सा ट्री बनाइए सिर्फ फीचर 1 और फीचर 2 को लेके. दिस इज ट्री 1. फिर आप एक और ट्री बनाइए फीचर 1, फीचर 3 को लेके. फीचर मतलब कॉलम बेटा. फिर आप ट्री बनाइए फीचर 3, फीचर 4 को लेके. फिर ट्री बनाइए फीचर 2, फीचर 4 को लेके. अब आप ये सारे ट्री को एक साथ यूज करेंगे टू गिव द रिजल्ट. यूज ट्री टुगेदर. नाउ व्हेन आई से टुगेदर इसमें दो बातें होंगी. या तो दे विल बी यूज्ड इन अ सीक्वेंस और दे विल बी यूज्ड इन पैरेलल. अगर ये सीक्वेंस में ऐड किए जाएंगे तो हम इन्हें बूस्टिंग कहते हैं और अगर ये पैरेलल ऐड यूज किए जाएंगे तो हम इन्हें बैगिंग कहते हैं. So you don't have to worry much about bagging and boosting. You will learn this in your semester 7. Now what I am trying to learn teach you is कि मेरा एक तरीका है कि मेरे डेटा सेट में चार फीचर हैं. मैं एक सिंगल डिसीजन ट्री यूज करता हूं जो चारों फीचर पे एक ट्री बना के मुझे रिजल्ट देगा. दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी भी दो कॉलम पे, किसी भी तीन कॉलम पे ऐसे छोटे-छोटे ट्री बनाऊंगा. ये जो मेरा ट्री है बेटा, ये जो भी डिसीजन देगा किसी भी दो कॉलम पे देगा. फीचर 1, फीचर 2. तो ये स्ट्रांग लर्नर नहीं है, ये एक स्ट्रांग लर्नर है. क्योंकि यहां पे चार सारे फीचर्स कंसीडर किए गए हैं. क्यों? क्योंकि सारे फीचर्स कंसीडर किए गए हैं. लेकिन यहां जो मैं ट्री की बात कर रहा हूं, आप देखिए कोई भी ट्री दो कॉलम से ज्यादा यूज नहीं कर रहा. कोई भी ट्री दो कॉलम से ज्यादा यूज नहीं कर रहा. अगर कोई भी ट्री दो कॉलम से ज्यादा यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो ट्री है ये स्ट्रांग लर्नर नहीं है, ये वीक लर्नर से कहा जाता है. इसे हम कहते हैं वीक लर्नर. क्योंकि आपके डिसीजन बनाने के लिए आपको चार कॉलम दिए गए थे, आप चार में से सिर्फ दो कॉलम यूज करके डिसीजन बना रहे हैं. लेकिन हम ऐसे बहुत सारे यूज कलेक्शन ऑफ वीक लर्नर, इन्हें हम वीक लर्नर कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन है वो किसी भी दो कॉलम या तीन कॉलम को यूज करके दिया गया है. सो रिमेंबर वन थिंग, एक तरीका है डिसीजन ट्री जहां आप सारे फीचर यूज करके डिसीजन बनाते हैं, या दूसरा तरीका है ensemble लर्निंग जहां पे एक से ज्यादा मेथड को आप यूज करते हैं. हर मेथड वीक है, हर मेथड अपने आप में थोड़ा कमजोर है क्योंकि वो अपना लर्निंग सारे फीचर्स पे नहीं कर रहा है. मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. मैं आपको कह रहा हूं कि अब तक हमने दो तरीके पढ़े क्लासिफाई के, डिसीजन ट्री और नेम बेस्ड. हो सकता है कि ये दोनों ही क्लासिफायर अलग अलग रिजल्ट दें. तो हमें क्या यूज करना है? हमें ensemble learning. सी इन ensemble learning we may use many weak classifiers to generate better response. ओके. नाउ पॉइंट ये सर, पॉइंट ये है, मैंने कहा आपको एग्जांपल नहीं याद रखना है. आपको ये समझना है कि कोई एक तरीका सफिशिएंट नहीं होता है अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए. हम ऐसे बहुत ज्यादा छोटे-छोटे तरीके का कलेक्शन यूज करेंगे हमारे रिजल्ट को बेटर करने के लिए. जैसे मैंने कहा आपसे कि हो सकता है कि अलग-अलग मेथड अलग-अलग रिजल्ट दे. हो सकता है अलग-अलग मेथड अलग-अलग रिजल्ट दे. तो हमें क्या करना है सर? हमें हमारे क्लासिफायर को इवैल्यूएट करना है. वी नीड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफायर. मेरे को मेरे क्लासिफायर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना है. तो हम जाके अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लासिफायर के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का कितना तरीका है. लेट अस फॉर इवैल्यूएशन, लेट अस कंसीडर बाइनरी क्लासिफायर. सर बाइनरी क्लासिफायर का मतलब दो ही क्लासेस होंगे बेटा, दो ही क्लासेस होंगे. सो इन बाइनरी क्लासिफायर क्लास ऑफ आवर इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट की क्लासेस है बेटा टेक्निकली. जो हमारे इंटरेस्ट का क्लास होगा उसको हम पॉजिटिव क्लास बोलेंगे. क्लास ऑफ आवर इंटरेस्ट इज पॉजिटिव क्लास एंड अदर क्लास आर कॉल्ड एज नेगेटिव क्लास. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मैंने आपसे कहा अब हम वो तरीके देखने जा रहे हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफायर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे. हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी क्लासिफायर के बारे में कि आओ सीखें बाइनरी क्लासिफायर्स की परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करते हैं. ना यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, जो हमारे इंटरेस्ट का क्लास है उसको हम पॉजिटिव क्लास कहेंगे, जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है उसको हम नेगेटिव क्लास कहेंगे. बहुत ध्यान से सुनना. ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सर ये हमारे इंटरेस्ट के क्लास का मतलब क्या होता है? हमारे इंटरेस्ट के क्लास का मतलब होता है, सपोज मैं एक सर्वे कर रहा हूं. ठीक है, मैं एक मल्टीप्लेक्स में जाता हूं. ध्यान से सुनना. मैं मल्टीप्लेक्स में चार मूवीज लगी हैं. कल की और क्या मूवी है? स्त्री 2 और कोई मूवी नाम बताया मैं भूल गया. कल की, स्त्री 2 और क्या है? चेक करना पड़ेगा. तो लेटेस्ट मूवी नाम बताओ. बिल्कुल मैं बुक में शो देखूंगा. ओके. कुंभार रिलीज किया था इसको. और क्या है? खेल में ना इमेजिन तो मैं मल्टीप्लेक्स में जा रहा हूं और मेरे को पता करना है क्या लोगों को कल की मूवी अच्छी लगी कि नहीं. उसके बेसिस पे मेरा इंटरेस्ट का क्लास कौन सा है? मेरे इंटरेस्ट का मूवी कौन सा है? कल की मूवी. अब दो बातें होती हैं देखो, बेस्ड ऑन द लर्निंग. मेरे मल्टीप्लेक्स में चार मूवीज लगी हुई हैं, वहां से लोग मूवी देख के आएंगे. तो ये चार मूवी देख के आएंगे. देयर आर टू थिंग्स, एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड. ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसको कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स. एक्चुअल का मतलब एक्चुअल लोगों ने कल की मूवी देखी, एक्चुअल लोगों ने स्त्री 2 मूवी देखी, एक्चुअल लोगों ने कुंभार मूवी देखी, एक्चुअल लोगों ने खेल में मूवी देखी है. और प्रेडिक्ट किया है कि लोगों ने कल की मूवी देखी. प्रेडिक्टेड है कि लोगों ने स्त्री 2 मूवी देखी. प्रेडिक्टेड है कि लोगों ने कुंभार मूवी देखी. प्रेडिक्टेड है लोगों ने खेल में मूवी देखी. क्या मतलब? ये प्रेडिक्टेड है कि लोगों ने कल की देखी है, स्त्री 2 देखी है, कुंभार देखी है, खेल में देखी है. और ये एक्चुअल है. अब तुम मुझे बताओ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरा कॉन्सेप्ट में मेरे को इंटरेस्ट है कल की मूवी. मुझे ये पता करना है लोगों ने कल की मूवी देखी कि नहीं.
ना ना प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो मेरा प्रेडिक्शन है ये वो रो है जहां लोगों ने कल की मूवी देखी, ये वो रो है जहां लोगों ने, तो इट इज कल की देखी, इट इज कल की नहीं देखी, यानी ये पॉजिटिव है और ये सारे नेगेटिव है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्त्री 2 देखा कि नहीं, तुम्बाड़ देखा कि नहीं, केल देखा कि नहीं, मेरा एक इंटरेस्ट है कल की। तो अगर कल की मूवी देखी तो पॉजिटिव है, कल की नहीं देखी, अगर लोगों ने स्त्री 2 देखा मतलब कल की नहीं देखा, तुम्बाड़ देखा मतलब कल की नहीं देखा, खेल खेल में देखा मतलब कल की नहीं देखा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू नॉट थिंक कि मेरे पास चार क्लासेस है, कल की, स्त्री 2, तुम्बाड़ एंड खेल खेल में। मेरे पास चार क्लास नहीं है, मेरे पास दो ही क्लास है, कल की एंड नॉट कल की। ये मेरा प्रेडिक्शन है और एक्चुअली में ये वो है जो लोगों ने कल की देखी तो ये पॉजिटिव है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कल की नहीं देखी तो ये सारे नेगेटिव है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव ओनली टू क्लासेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डू नॉट थिंक जिन्होंने कल की नहीं देखी फिर उन्होंने चाहे स्त्री 2 देखा हो, फिर उन्होंने चाहे तुम्बाड़ देखा हो, फिर उन्होंने चाहे खेल खेल में देखा हो, दो ही इंटरेस्ट है, कल की देखी, कल की नहीं देखी। नाउ इमेजिन करो ये वो लोग हैं जिन्होंने कल की मूवी देखी और एक्चुअली में और प्रेडिक्टेड में कल की प्रेडिक्ट किया। अगर प्रेडिक्टेड में कल की प्रेडिक्ट किया तो इसका मतलब पॉजिटिव है, कल अगर प्रेडिक्टेड में कल की प्रेडिक्ट किया इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये रो बेटा प्रेडिक्टेड कल की है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी कल की मूवी है, तो इस रो में जो भी आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे और बाकी सब में अगर मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि बंदे ने स्त्री 2 देखा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तुम्हारा देखा तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, खेल खेल में देखा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो जिनको मैंने प्रेडिक्ट किया है कल की मूवी देखी वही रो पॉजिटिव है, बाकी आपने स्त्री 2 देखा, तुम्हारा देखा, खेल खेल में देखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब आपने कल की नहीं देखा। तो जिन्होंने भी कल की नहीं देखा ऐसा प्रेडिक्ट हुआ है वो सारे नेगेटिव है। कोई कंफ्यूजन इसमें आपको पहले तो यहाँ पे प्लीज आस्क डाउट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लीज। यस ओके ओके रंजीत, अच्छा अब देखिए कहानी कैसी है। मैंने एक्चुअली ये कॉलम देखिए, ये कॉलम एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने कल की देखी है और हमने प्रेडिक्ट भी किया कि कल की देखी है, कल की देखा है एक्चुअली और कल की देखा है ऐसा प्रेडिक्ट भी किया है। इसका मतलब ये जो भी पॉजिटिव है वो ट्रू पॉजिटिव है। तो अब मैं आपको फॉर इवैल्यूएशन देखिए, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बताना चाह रहा हूं। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्लासिफायर वी यूज टेस्ट सेट। हमने ऑलरेडी बताया आपको टेस्ट सेट क्या है। नाउ बाइनरी क्लासिफायर का मतलब क्या है? फॉर बाइनरी क्लासिफायर वी हैव सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज प्रेडिक्टेड। एक्चुअली ट्रू, एक्चुअली फॉल्स, प्रेडिक्टेड ट्रू, प्रेडिक्टेड फॉल्स। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसको टीपीपी कहते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब होता है एक्चुअल पॉजिटिव, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव। जो एक्चुअली में पॉजिटिव है आपने उसी को पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, तो देखिए जो एक्चुअली में ट्रू है आपने भी ट्रू बोला तो ये ट्रू पॉजिटिव है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब वो एक्चुअल नेगेटिव थे लेकिन आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया। प्रेडिक्टेड पॉजिटिव इसका मतलब आपने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया लेकिन वो एक्चुअली नेगेटिव थे, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। एक्चुअली में क्या था फॉल्स, लेकिन प्रेडिक्ट किया कि आपने ट्रू। ये रो देखिएगा, ये रो में जहां भी ट्रू है प्रेडिक्शन में वो सारे पॉजिटिव होंगे। इस रो में जितने भी मैंने प्रेडिक्टेड ट्रू बोले इसका मतलब पॉजिटिव, लेकिन ये ट्रू था और मैंने ट्रू प्रेडिक्ट किया, ट्रू पॉजिटिव। ये फॉल्स था, मैंने ट्रू प्रेडिक्ट किया, ये फॉल्स पॉजिटिव। सो एक्चुअली इट वाज नेगेटिव बट इट वाज प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, इसका मतलब फॉल्स पॉजिटिव। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टीएन, ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का मतलब एक्चुअल नेगेटिव है एंड प्रेडिक्टेड भी नेगेटिव। तो एक्चुअली फॉल्स था, प्रेडिक्टेड भी फॉल्स है। देखिए प्रेडिक्शन में जहां मैंने फॉल्स प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्शन में मैंने जहां भी फॉल्स प्रेडिक्ट किया वो नेगेटिव वाला है। नेगेटिव का मतलब मैंने प्रेडिक्ट किया नेगेटिव। अब ये वाला सच में फॉल्स था और मैंने फॉल्स ही प्रेडिक्ट किया तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव मतलब एक्चुअली नेगेटिव था और प्रेडिक्ट भी नेगेटिव किया गया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉल्स नेगेटिव, मतलब एक्चुअली वो पॉजिटिव था लेकिन आपने प्रेडिक्ट किया नेगेटिव। जैसे ये वाला प्रेडिक्शन है फॉल्स यानी नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू था, ये हो गया फॉल्स नेगेटिव। ये जो मैट्रिक्स बनता है दी, ये जो मेरे मैट्रिक्स है पैरामीटर्स है, दीस पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, पैरामीटर्स आर represented in matrix form known as confusion matrix. I hope तुमको ये समझ आएगा। किसी को भी दिक्कत है प्लीज पूछो इसमें। confusion matrix, this is confusion matrix. I'm going back to our example, but पहले ये वाला समझ में आया क्या आप लोगों को? What is true positive, what is false positive, what is true negative, what is false negative? ये समझ में आया क्या आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइए जरा। Kindly let me know if you got this. Ask if you have any question. Yes? Okay. चलो ये वाला देखते हैं, ये वाला मुझे बताइए। ये वाला देखते हैं। ये कल देखिए, बंदे ने कल की देखा एक्चुअली और प्रेडिक्ट किया कल की, तो ये हो गया ट्रू पॉजिटिव। बट मेरा प्रेडिक्शन पॉजिटिव है, तो ये सारे मैंने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, लेकिन बंदे ने कल की नहीं देखा, स्त्री 2 देखा मैंने कल की प्रेडिक्ट किया, बंदे ने तुम्हारा देखा मैंने कल की प्रेडिक्ट किया, बंदे ने खेल खेल में देखा मैंने कल की प्रेडिक्ट किया, तो ये सारे पॉजिटिव क्या हो गया? कौन ये सारे पॉजिटिव क्या हो गया? False positive. परफेक्ट, फॉल्स पॉजिटिव सारे। क्योंकि आंसर क्या, मैंने आई नॉट बॉदर टू स्त्री 2 देखा नहीं, पॉइंट तो ये है कल की देखा या कल की नहीं देखा। जैसे मैंने लिखा जो क्लास में इंटरेस्ट का पॉजिटिव है बाकी सारे क्लास नेगेटिव है, मेरे इंटरेस्ट का क्लास का कल की, तो जिन्होंने कल की देखा पॉजिटिव है, जिन्होंने कल की नहीं देखा वो नेगेटिव। ओके अब ये देखिए स्त्री 2, यहां पे मैंने प्रेडिक्ट किया है कल की, बट यहां पे सॉरी एक्चुअली ये पूरा कॉलम कल की मूवी का है लेकिन प्रेडिक्टेड नॉन कल की है, तो ये सब क्या हो गया? फॉल्स नेगेटिव। क्योंकि एक्चुअली लोगों ने क्या देखा था कल की, लेकिन मैंने प्रेडिक्ट किया कि उन्होंने कल की नहीं देखा। समझा कि नहीं? अच्छा ये जो बाकी सारे हैं वो क्या होंगे बेटा? ये जो बाकी सारे हैं वो क्या होंगे? एक्चुअली में इन्होंने स्त्री 2 देखा, प्रेडिक्ट स्त्री 2 किया, एक्चुअली में तुम्हारा देखा, प्रेडिक्ट स्त्री 2 किया। अभी प्लीज खुद को कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप ये मत सोचिए इसने तुम्हारा देखा लेकिन स्त्री 2 प्रेडिक्ट किया, बिकॉज़ आई एम नीदर इंटरेस्टेड इन तुम्हारा एंड नॉट इंटरेस्टेड इन स्त्री 2। सो ये सब का मतलब एक्चुअली नेगेटिव एंड प्रेडिक्टेड आल्सो नेगेटिव, तो ये सारे क्या हो गए बेटा? ट्रू नेगेटिव। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यस और नो? यस यस यस, दे ऑल विल बी ट्रू नेगेटिव। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ कि सर उसने तो खेल खेल में देखा है और मॉडल में प्रेडिक्ट किया स्त्री 2। मैंने कहा आपके पास सिर्फ दो ही क्लास है, या तो कल की या तो नॉन कल की, खत्म। वो नॉन कल की में आप स्त्री 2 देखो, तुम्हारा देखो, खेल खेल में देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई होप यू आर ओके ऑन दिस। सबको समझ में कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? कोई दिक्कत? ओके नाउ ये जो हमने कुछ पैरामीटर्स पढ़े हैं, based on these parameters we have following metrics. हमारे पास कुछ metrics हैं. There is something called as accuracy of a classifier. What is accuracy of a classifier? कैसे मेजर करते हैं? Accuracy क्या कहता है? Out of total prediction, number of correct prediction. Out of total prediction आपने जो किया, उसमें से correct prediction क्या क्या होगा? चलो मुझे हेल्प करो. Total prediction में क्या क्या किया बेटा? Total prediction में true positive, true negative, false positive, false negative. ये मैंने चारों टाइप के prediction किए हैं. उसमें से correct prediction बताइए कौन कौन सा है? इसमें से correct prediction कौन कौन सा है बेटा? What are the correct predictions? Okay, okay.
ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव बेटा, ट्रू नेगेटिव बोलते उसको, ट्रू पॉजिटिव मतलब जो सच में पॉजिटिव था हमने पॉजिटिव बोला, ट्रू नेगेटिव जो सच में नेगेटिव था हमने नेगेटिव बोला। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एक्यूरेसी का है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है? आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्टेड, आपने जितनों को भी पॉजिटिव बोला, नंबर ऑफ करेक्ट पॉजिटिव, आपने जितनों को भी पॉजिटिव बोला है उसमें से करेक्ट पॉजिटिव कितने? हमने कितनों को पॉजिटिव बोला बेटा? ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। हमने दोनों को पॉजिटिव बोला है, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। हमने दोनों को पॉजिटिव बोला है, इनमें से करेक्ट कितने हैं? करेक्ट है मेरा ट्रू पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं प्रिसिशन। तीसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिकॉल, उसी को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं, टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट। दोनों में फर्क क्या है? ये क्या होता है? आपका क्लासिफायर ने जितनों को भी पॉजिटिव बोला है, जरूरी नहीं सारे सही हो, आपके क्लासिफायर ने जितनों को भी पॉजिटिव बोला है उसमें से करेक्ट पॉजिटिव कौन है? अब रिकॉल में क्या आता है? रिकॉल में आता है टोटल एक्चुअल पॉजिटिव, जितने भी एक्चुअल पॉजिटिव हैं उनमें से करेक्ट पॉजिटिव। दोनों में फर्क है। एक्चुअल पॉजिटिव कौन है बेटा? ट्रू पॉजिटिव इज एक्चुअल पॉजिटिव एंड एक्चुअल पॉजिटिव में कौन पाएगा? ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव एंड हां False positive. फॉल्स नेगेटिव। देख 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 बेटा, ये एक्चुअल पॉजिटिव में कल की एक्चुअल पॉजिटिव में क्या है? ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव मतलब आपने जिसको नेगेटिव बोला वो फॉल्स है, इसका मतलब एक्चुअली क्या होगा? पॉजिटिव। समझा ना? सो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इज योर टोटल एक्चुअल पॉजिटिव। उनमें से करेक्ट पॉजिटिव कौन हो गए? ट्रू पॉजिटिव। इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिसिटी, इसको हम पीएनआर भी कहते हैं, ट्रू नेगेटिव रेट। ये क्या कहता है? जैसे यहाँ टोटल एक्चुअल पॉजिटिव, यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा टोटल एक्चुअल नेगेटिव में से नंबर ऑफ करेक्ट नेगेटिव। टोटल एक्चुअल नेगेटिव लिखो, ट्रू नेगेटिव प्लस एक्चुअल नेगेटिव कौन बेटा? ट्रू नेगेटिव प्लस यस नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मैंने जिसको पॉजिटिव बोला वो पॉजिटिव नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव। मैंने जिसको पॉजिटिव बोला वो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव है और न्यूमरेटर में आएगा टीएन, करेक्टली आइडेंटिफाइड, ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। इसका क्लियर है? साइड क्लियर हो गया। एक्यूरेसी, टोटल प्रेडिक्शन में से करेक्ट प्रेडिक्शन। प्रिसिशन, टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया उसमें से करेक्ट पॉजिटिव। रिकॉल, एक्चुअल पॉजिटिव में से करेक्ट पॉजिटिव। स्पेसिफिसिटी, ट्रू नेगेटिव रेट, एक्चुअल नेगेटिव में से करेक्ट नेगेटिव। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज F1 स्कोर। F1 स्कोर इज हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसिशन एंड रिकॉल। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा? हार्मोनिक मीन 2 upon 1 upon precision plus 1 upon recall, that will give you precision plus recall, 2 into precision into recall upon precision plus recall। ये हमारा पांचवा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। ये आपके किसी भी क्लासिफायर के किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी एंड F1 स्कोर। इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन बेटा? यस, एनी कंफ्यूजन? ओके, नाउ ओके, लेट मी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके लेट मी टॉक अबाउट क्लस्टरिंग। Now clustering is what? मैंने आपसे स्टार्ट बताया, clustering क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इट इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड मतलब लेबल नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे भी ये वाला है, ये आपके सामने मैंने एक डेटा सेट रखा है, 4 फीचर्स बेटा, आउटलुक, टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, और इन सब के बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि खेलना है या नहीं खेलना है, प्लेड और नॉट। हमको ये डिसीजन लेना है खेलना है या नहीं खेलना है, प्लेड और नॉट। अगर मैंने ये लास्ट कॉलम हटा दिया, अगर मैंने ये लास्ट कॉलम हटा दिया, मतलब मैं आपको फीचर तो बता रहा हूं कि व्हाट इज आउटलुक, व्हाट इज टेंपरेचर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, बट आई एम नॉट गिविंग यू द फाइनल रिजल्ट। आई एम नॉट गिविंग यू द लेबल। मैं आपको लेबल नहीं दे रहा हूं बेटा। आई एम नॉट गिविंग यू लेबल, मैं आपको लेबल नहीं दे रहा हूं। अगर मैंने आपको लेबल दिया, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसका मतलब आप ये सीख रहे हो, ओके अगर आउटलुक सही है, टेंपरेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है, विंड वीक है, तो नहीं खेलना है। मतलब अगर ये फीचर के ये वैल्यू होंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपको पता है, लेबल्ड है। अब ये मेरा लेबल, ये मेरा डिसीजन है। अगर मैंने कुछ सैंपल सेट दिए हैं जहां मैंने कुछ एट्रीब्यूट यानी फीचर को वैल्यू दिया है और मैंने लेबल भी दिया है और मैंने लेबल भी दिया है, हम इसे कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब इन पैरामीटर्स के अगर ये वैल्यू होंगे तो क्या करना है मुझे ये पता है। लेकिन अगर मैंने लास्ट कॉलम नहीं दिया होता, मैंने आपको बोला होता यार आंसर क्या एक्सपेक्टेड है वो भी मालूम नहीं, यहाँ तो लास्ट कॉलम देख के आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सर 2 ही क्लास एक्सपेक्टेड है, प्लेड यस और नो। आपको ये रियलाइज हो रहा है कि सर 2 ही क्लास एक्सपेक्टेड है, प्लेड यस और नो। लेकिन अगर मैंने आपको ये लेबल नहीं दिया होता, मैंने आपको ये लेबल नहीं दिया होता, मैंने सिर्फ 4 कॉलम दिया होता और मैं आपको बोलता बेटा आप जितने पॉसिबल इनमें ग्रुप बन सकते हैं आप उतना बनाइए। जिसमें यहाँ पे 2 ग्रुप बन रहे हैं, यस नो। ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि लेबल दिया हुआ है। सो दिस लर्निंग इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या बेटा? आपको लेबल नहीं दिया है, तो आपको अगर लेबल नहीं दिया है, योर लेबल आर नॉट लोडेड। अगर मैंने आपको लेबल नहीं दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1000 इमेजेस है, 1000 इमेजेस है, मैंने एक छोटे से बच्चे को 1000 इमेज दे दिया है, मैंने उस बच्चे को नहीं बताया, हमको स्कूल में सिखाया जाता है, ये एप्पल का फोटो दिखाया जाता है और बोला जाता है ये एप्पल है, हमको एनिमल्स की फोटो दिखाया जाता है और बोला जाता है ये एनिमल्स है, हमको कार की फोटो दिखाया जाता है और बोला जाता है ये कार है। इस तरह से जब हम सीखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ इमेजिन वी आर गिवन 1000 इमेजेस एंड मैं आपको बता रहा हूं कि गिवन टू चाइल्ड, इस 1000 में बेटा 300 इमेजेस कार के हैं, 200 इमेजेस फ्लावर्स के हैं और 500 इमेजेस है ना एनिमल्स के हैं। ये मैंने बच्चे को बताया नहीं है, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड। ये मैंने बताया नहीं है, बच्चे को मैंने 1000 इमेज दे दिया है। अब बच्चा क्या करेगा बेटा? ये बेस्ड ऑन नाउ सी चाइल्ड इज नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट लेबल। लेबल के बारे में कोई जानकारी नहीं। बच्चा क्या करेगा? बच्चा ना 3 क्लस्टर बनाएगा, मैं ग्रुप में नाम नहीं दूंगा। बच्चा क्या करेगा? बेटा एक चीज तो पता है, बच्चे को अगर ये पता नहीं है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन एक चीज तो पता होगी कि सारे कार के फोटो सिमिलर रहेंगे। कार और फ्लावर ये एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, फ्लावर और एनिमल ये एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, करेक्ट है? तो बच्चा क्या करेगा? सारे 300 कार की फोटोज ना वो एक क्लस्टर बनाएगा, क्लस्टर 1। उसी मैंने इसको क्लस्टर 1 बोला, मैं बच्चे को ये पता नहीं इसको कार कहते हैं, लेकिन बच्चा करेगा बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द इमेजेस। बच्चा करेगा बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इमेजेस द चाइल्ड विल ग्रुप देम टुगेदर। क्लस्टर 2 में क्या करेगा? बच्चा करेगा सारे 200 फ्लावर्स के इमेजेस रखेगा और क्लस्टर 3 में बच्चा करेगा सारे 500 एनिमल्स की फोटो रखेगा। इसी को कहते हैं क्लस्टरिंग। बच्चे को इसको कार बोलते हैं, बच्चे को मालूम है कि सारी कार की फोटोज बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि क्लस्टरिंग होता क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इन क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज। आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है उनके सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के ऊपर। ना अभी बात देखिए, एक चीज तो पक्की है बेटा, अभी बात बताइए। चलो बेटा, इस क्लस्टर के अंदर जो भी होंगे वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे यानी उनकी सिमिलरिटीज ज्यादा है, यस नो? फॉर ऑब्जेक्ट्स विद इन क्लस्टर सिमिलरिटी इज वेरी हाई एंड डिसिमिलरिटी इज लो। भाई सारे कार के फोटोज इनकी आपस की सिमिलरिटी बहुत हाई होगी। सिमिलरिटी हाई है इसका मतलब डिस्टेंस इनके बीच का लो होगा, डिसिमिलरिटी लो है। समझे क्या मतलब? सिमिलरिटी हाई है, डिसिमिलरिटी लो का मतलब क्या होता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए सिमिलरिटी ज्यादा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स क्लस्टर के अंदर होंगे उनके आपस की सिमिलरिटीज काफी हाई होगी, डिसिमिलरिटीज काफी लो होगी।
when I'm talking about objects between clusters, जैसे when I'm talking about particular object in this cluster and I'm talking about particular object in this cluster, okay, समझो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है और ये ऑब्जेक्ट 3 है। ऑब्जेक्ट 1 और 2 ये दोनों एक ही क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 और 2 में सिमिलरिटी हाई होगी, डिसिमिलरिटी कम होगी। डिसिमिलरिटी कम होगी इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट 1 डिस्टेंस ज्यादा होंगे, सिमिलरिटीज कम होंगी, डिसिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो फॉर ऑब्जेक्ट बिटवीन द क्लस्टर सिमिलरिटी इज लो, डिसिमिलरिटी इज हाई। जब मैं डिसिमिलरिटी हाई कहता हूं इसका मतलब डिस्टेंस इज हाई। सो अब देखिए मैं क्या कहता हूं, हमारा गोल क्या है? व्हाट इज गोल ऑफ क्लस्टरिंग? व्हाट इज गोल ऑफ एनी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम? हमको क्लस्टरिंग में हम करते क्या? हम क्लस्टरिंग में हर ऑब्जेक्ट का हर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या निकालेंगे? हम क्लस्टरिंग में हर ऑब्जेक्ट का हर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम डिस्टेंस निकालेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट जिनका डिस्टेंस कम होगा वो एक क्लस्टर में ग्रुप कर दिए जाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो दूसरे क्लस्टर में रहेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि भाई हमारा जो भी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है उसका गोल क्या है? कैन यू गेस? क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का गोल क्या है? क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का गोल है टू मिनिमाइज इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस। इंट्रा क्लस्टर इसका मतलब विथिन क्लस्टर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम क्लस्टर शुड बी मिनिमम। और दूसरा मतलब अपनी ही क्लस्टर के ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए एंड टू मैक्सिमाइज इंटर क्लस्टर डिस्टेंस। इंटर क्लस्टर यानी बिटवीन क्लस्टर, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लस्टर शुड बी मैक्सिमम। ये दोनों गोल क्या है? ये दोनों का मतलब क्या है? देखिए गोल का मतलब क्या है? हमको इंश्योर करना है, हमको क्या इंश्योर करना है? वी नीड टू इंश्योर दैट ऐसा नहीं हो कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं डू नॉट अकर इन डिफरेंट क्लस्टर। अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर है तो दो अलग अलग क्लस्टर में नहीं जाने चाहिए एंड दिस सिमिलर ऑब्जेक्ट डू नॉट अकर इन सेम क्लस्टर। ये मैं हमको इंश्योर करना है कि एक क्लस्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स उनके डिस्टेंस मिनिमम हो, बिटवीन क्लस्टर जो ऑब्जेक्ट्स उनके डिस्टेंस मैक्सिमम होने चाहिए। सर ये करके फायदा क्या होगा? ये फायदा ये होगा कि हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं वो अलग अलग क्लस्टर में नहीं जाने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट डिसिमिलर हैं वो सेम क्लस्टर में नहीं आने चाहिए। नाउ मैं आपकी जगह रहूंगा, सो देयर विल बी अ क्वेश्चन इन माय माइंड, देयर विल बी अ क्वेश्चन इन माय माइंड। सर ये जो बार-बार बोल रहे हो, ये जो आप बार-बार बोल रहे हो कि डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं? बराबर, चलो लेट्स गो अहेड। चलो हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस क्योंकि क्लस्टरिंग में सारा फिनोमेना, सारा फिलॉसफी डिस्टेंस के ऊपर है। व्हाट इज डिस्टेंस? इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस, इट इज मेजर ऑफ dissimilarity between the objects। खत्म। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज डिस्टेंस, आपका सिंपल आंसर है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज नथिंग बट द मेजर ऑफ dissimilarity between the objects। अगर सिमिलरिटी हाई होगी तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कम होगा, अगर डिसिमिलरिटी हाई होगी तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन ये सर, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करोगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करना अगर सिंपल नंबर है, अगर सिंपल नंबर है तो हम बड़े आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सर कि भाई डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स? हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस between objects? Well, it depends on what type of attribute the object has. सर ऑब्जेक्ट मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा? सर मैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उनके एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं। ठीक है, लेट्स सी जैसे एग्जांपल अगर मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एट्रीब्यूट 3। ऑब्जेक्ट 1 पहला एट्रीब्यूट 5.1 2.6 52.7 29.8 54.5 15.9 ऐसे मैंने पूछ दिए। तो बड़े एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं? ये जो एट्रीब्यूट कंटीन्यूअस वैल्यू टाइप के हैं। दीस एट्रीब्यूट्स आर ऑफ टाइप विद कंटीन्यूअस वैल्यू। बट अगर मैंने ऐसे लिखा है ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 2 एट्रीब्यूट 3 स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग वीक स्ट्रांग एट्रीब्यूट 3 इज ऑन द कोल्ड हॉट। ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दीस आर डिस्क्रीट वैल्यूज। सो पॉइंट ये है सर कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कोई दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस कैसा है? तो अब सर ये डिपेंड करता है कि उनका वैल्यू किस टाइप का होगा। जब हम बात करते हैं वैल्यू किस टाइप के होंगे तो दो टाइप के वैल्यू हमारे सामने दिख रहे हैं। एक जहां पे एट्रीब्यूट्स को कंटीन्यूअस वैल्यू दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरा जहां पे एट्रीब्यूट्स को डिस्क्रीट वैल्यू दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हमको सीखना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स और फीचर्स। ये एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिगिन क्लस्टरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर आप ये सारे डिस्टेंस सारे फॉर्मूला तब लगा पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपके जो फीचर्स हैं, आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं कि किसी भी एट्रीब्यूट्स किसी भी वेरिएबल को हम क्या टाइप के वैल्यूज दे सकते हैं। पहला नॉमिनल वेरिएबल्स। क्या टाइप के वेरिएबल होंगे? पहला टाइप क्या है? नॉमिनल वेरिएबल। नाउ व्हाट इज नॉमिनल वेरिएबल? प्लीज ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होता है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऐसे वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं जो कोई कैटेगरी हो, कोई कोड हो, कोई स्टेट हो, या इसे हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज ऑफ सच वेरिएबल्स represents some kind of categories, code or state। example अगर मैंने कहा कलर ऑफ कार, ये मैं उसके वैल्यूज हो सकते हैं रेड ब्लू ग्रीन। ये क्या है? ये कोई कैटेगरी कोई कोड रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस। तो सिंगल मैरिड डिवोर्सी, ठीक है, ये किसी कोड को किसी कैटेगरी को किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, जब मैं इस टाइप के वेरिएबल्स की बात करता हूं जैसे कलर ऑफ कार रेड ब्लू या ग्रीन, क्या कलर को किसी ऑर्डर में हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए या कोई ऑर्डर मैं किसी भी कलर को किसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना चाहिए? एनी डिफरेंस बेटा? बोलो, विल मेक एनी डिफरेंस? नहीं बनेगा। हाँ, तो क्या मैं आपसे कहूं कि नॉमिनल वेरिएबल्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं वैल्यूज डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक बिल्ट मॉडल्स।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? दैट इज, इसका मतलब बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ दिस एट्रीब्यूट वी कैन अरेंज देम इन ऑर्डर। बराबर कि नहीं? जैसे समझो मैं बोलता हूँ 1 0 1 0 1 0 3, तो क्या रोल नंबर के बेसिस पे मैं स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन मैं अगर मैं कलर के बेसिस पे अरेंज करूँ, उससे कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बनता, मैं कंक्लूजन नहीं कर सकता। इट विल बी डन प्योरली फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज पे क्या मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता हूँ? क्या मैं मीन, मीडियन, मोड ऐसा कर सकता हूँ? हाँ या ना? कैन बी? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? रेड रेड ब्लू ग्रीन क्या मीडियन करूंगा इसमें? कितने ब्लू का मीडियन? कितने? अरे बेटा सारे डेटा सेट में है, समझो 100 का है, रेड ब्लू क्लस्टर बनाना अलग है, उस कॉलम पे मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। रेड ब्लू ग्रीन का मीडियन से निकाल लेकिन नंबर नहीं है ना। मैं मीडियन के लिए आपको एक बात बताओ, एक बात बताओ, सही काउंट कर सकते हैं। मैं काउंटर ऑपरेशन ओनली काउंट कर सकता हूं, दूसरा कुछ नहीं। मैं हमने जो कहा था जैसे मीडियन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। अब रेड ब्लू ग्रीन का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कैसे करेंगे आप? देयर इज नो वे। इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम कैटेगरी का वैल्यू देखते हैं बेटा, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं यू कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इट डज नॉट मेक सेंस। एग्जांपल, मीन, मीडियन, स्टेप, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो सबसे पहला प्रश्न है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। पहला है नॉमिनल वेरिएबल्स। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं बेटा, इनके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो फर्स्ट इज नॉमिनल वेरिएबल। द फर्स्ट टाइप इज नॉमिनल वेरिएबल। सेकंड टाइप ऑफ वेरिएबल दैट वी कैन हैव, वी कॉल इट एज बाइनरी वेरिएबल्स। अभी हम सब टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। नाउ बाइनरी वेरिएबल का क्या मतलब है? बाइनरी वेरिएबल आर लाइक नॉमिनल वेरिएबल्स ओनली, दे आर लाइक नॉमिनल वेरिएबल्स बट ओनली टू वैल्यूज और स्टेट और कैटेगरीज। मतलब जैसे कलर ऑफ द कार नॉमिनल, रेड ब्लू ग्रीन नॉमिनल, लेकिन इसमें सिर्फ अगर दो ही पॉसिबल हो कि इट शुड बी रेड एंड ब्लू ओनली। मैरिटल स्टेटस में तीन ऑप्शन है, सिंगल, मैरिड, डिवोर्सी। अगर दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, सिंगल एंड मैरिड, देन वी कॉल इट एज बाइनरी वेरिएबल। सो बाइनरी वेरिएबल नॉमिनल वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर उन वेरिएबल के सिर्फ दो स्टेट, दो वैल्यूज या दो ही कैटेगरीज होंगे, तो ही हम उन्हें कहेंगे कि वो बाइनरी वेरिएबल्स हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बाइनरी वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स। एक सिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स, दूसरे असिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स। नाउ सिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल में दो ही स्टेट पॉसिबल है, जैसे यहां पे क्या होगा, बोथ स्टेट will have equal importance. Example, gender समझ में दो ही दे दिया, मेल एंड फीमेल फॉर एग्जांपल। नाउ बेटा अगर मैं स्टूडेंट को ग्रुप कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, व्हेन ग्रुपिंग स्टूडेंट ऑन बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, बेटा अगर मेरे को बोला गया है कि बच्चों को ग्रुप कीजिए उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस से, तो क्या मैं जेंडर को वेट दूंगा कि नहीं दूंगा? इन सच केसेस मेल और फीमेल विल हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, यस और नो? विल हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ये क्या है? सिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल, जहां पे हमारे दोनों ही स्टेट को, दोनों ही कैटेगरी को इक्वल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। बाइनरी वेरिएबल में हम उसे कहेंगे वो सिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल। और सिमेट्रिक क्या कहता है? बोथ स्टेट do not have equal importance. Both the states do not have equal importance. Now, यहाँ पे same gender, male and female. But here when I'm grouping student, जैसे बेटा ओलंपिक्स देखो, ओलंपिक्स में जब भी स्पोर्ट्स होते हैं, तो मेल और फीमेल की कैटेगरीज अलग अलग है। तो जब हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, जब हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पे जेंडर इंपॉर्टेंस हो जाता है, बिकॉज़ मेल के सारे स्पोर्ट्स की कैटेगरीज अलग है, फीमेल के अलग है। वहाँ पे दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। वैसे इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब जेंडर इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स को एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे, जेंडर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने जेंडर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आई नीड टू से इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ। ऐसे वहाँ पे जो मेरा जेंडर होगा वो सिमेट्रिक वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन when grouping students on types of sports play, then male and female do not have same sex. Here gender is important. तो इसी का हम से कहेंगे असिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक बाइनरी वेरिएबल्स। आई होप कंफ्यूजन नहीं है प्लीज। तो सेम ही वेरिएबल अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेव करते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, पहले हमने कहा नॉमिनल वेरिएबल्स, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, स्टेट होते हैं यहाँ पे, बट 2 3 4 5 कितने भी स्टेट्स हो सकते हैं, हम इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना सेंस नहीं बनाता। बाइनरी वेरिएबल ये नॉमिनल वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन यहाँ हम एक रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि वेरिएबल्स के सिर्फ दो स्टेट ही पॉसिबल होंगे। इनमें दो टाइप के हैं, जब हमारे लिए स्टेट के वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, वैसे नॉट इंपॉर्टेंट इक्वल इंपॉर्टेंस, बट वैसे वैल्यू इंपॉर्टेंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। अगेन बिकॉज़ ये नॉमिनल है, इनमें भी अगेन हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना कोई सेंस नहीं बनाता। तीसरा टाइप का जो हमारा वेरिएबल है टाइप, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। Now, ordinal variable similar to nominal variables, हाँ? लेकिन यहाँ एक खास बात होती है, यहाँ खास बात होती है कि बेटा यहाँ जो वैल्यूज है बेटा, यहाँ जो वैल्यूज है उनमें एक रैंक आता है। या कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब वैल्यूज हैव मीनिंगफुल ऑर्डर और देयर इज मीनिंगफुल ऑर्डर फॉर रैंकिंग अमंग देम। लेकिन बट द मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पे रैंकिंग में ऑर्डर है, लेकिन मैग्नीट्यूड का मालूम नहीं पड़ेगा आपको, बट द मैग्नीट्यूड between successive values is not known. The magnitude between successive values is not known. Example. Coffee jug के क्या वैल्यूज हो सकते हैं बेटा? स्मॉल, मीडियम एंड लार्जर। बेटा ये दिखा है नॉमिनल जैसे किसी कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्जर। बट जस्ट टेल मी कि क्या हम इन वैल्यूज को एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? क्या हम इन वैल्यूज को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि नहीं? कौन? जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पे वैल्यूज है वो कैटेगरी ही है, जो वैल्यूज है वो स्पेस ही है, लेकिन हम इनको किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मीडियम स्मॉल से बड़ा है, कितना बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। लार्जर मीडियम से बड़ा है, कितना बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। तो भले ही यहाँ पे हम इन कैटेगरीज को एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि कौन किससे कितना मैग्नीट्यूड में बड़ा है, कौन किससे कितना मैग्नीट्यूड में बड़ा है। अच्छा, इन केसेस पे बेटा जैसे मैंने कहा आपको A क्लास इज बेटर देन A, जैसे कहा ना ग्रेड्स
A plus A, B plus B. We can arrange that in order, but magnitude is again how much A plus is greater than A. Unless and until conditions are given, it will be difficult for us to know. मैंने कहा small medium, पर जब तक quantity नहीं मिलेगा, मैंने कहा small is 200 ml, medium is 300 ml, जब तक ये ml नहीं आएगा, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा magnitude क्या है. और अगर मैंने ml दे दिया, 200 300 बोल दिया, then it is no longer nominal value. ध्यान देना. आप अगर कुछ ना कुछ तो quantity measure होगा, small का इतना, medium का इतना, बेटा वो पता नहीं हमें. अगर मैंने quantity दे दी, small मतलब 200, medium मतलब 400, इसका मतलब अब वो nominal values नहीं रहेंगे. Is that clear? confusion है आपको? ordinal मतलब order आ जाएगा, लेकिन magnitude हमको नहीं समझे. Any confusion in this? Come on. Anyone? Any confusion? Ordinal is done. ये nominal ही है. यहाँ पे खाली वैल्यूज में एक ऑर्डर आ जाता है. ओके, वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस. यहाँ पे आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं. आप ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए मीडियन ऑपरेशन परफेक्ट हो जाएगा, मोड ऑपरेशन परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम मीन नहीं निकाल सकते, एडिशन नहीं कर सकते. सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज मीडियन एंड मोड आर यूज्ड टू, बट ऑपरेशंस लाइक मीन एडिशंस आर मीनिंगलेस. इस बात को समझिए. ऑर्डिनल वेरिएबल. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल में. अच्छा चलिए, ये मैंने आपको बताया सब सिमिलर टाइप के हैं. क्यों सिमिलर टाइप के बताती हूं? क्योंकि इनमें कैटेगरीज हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है बेटा? दिया कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज. कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पहला इज रेड, रेड इज ए, रेड इज बी, जब साइज इज स्मॉल. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज हैं. इनको हम क्वालिटेटिव वैल्यूज भी कहते हैं. क्वालिटेटिव वैल्यूज. और ये कोई भी वैल्यू है, कोई भी, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव. They are not quantitative values. These are the common properties of all three: nominal, binary, and ordinal. Nominal only categories. If only two categories, binary. If between these categories we can have some kind of order, ordinal. अब हम एक चौथा टाइप का वेरिएबल देखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज. अब सर न्यूमेरिक वेरिएबल ये सब क्यों बता रहे हैं? जब हम टाइप नहीं समझेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. हम डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम क्लस्टरिंग नहीं कर पाएंगे. जब हम न्यूमेरिक वेरिएबल्स की बात करते हैं, वी कॉल देम एज क्वांटिटेटिव और मेजरेबल क्वांटिटीज. इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर्स और रियल नंबर्स. एग्जांपल जैसे एज, हाइट, डेट, टेंपरेचर. नाउ न्यूमेरिक वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं. टाइप्स. एक है इंटरवल स्केल. न्यूमेरिक वेरिएबल दो टाइप होते हैं. एक है इंटरवल स्केल और दूसरा है रेशियो स्केल. न्यूमेरिक वेरिएबल टाइप. एक है इंटरवल स्केल और दूसरा है रेशियो स्केल. व्हाट इज इंटरवल स्केल? जैसे यहां पे जो मेजरमेंट होगा, ध्यान से सुनिए. यहां पे मेजरमेंट होगा ऑन द स्केल ऑफ इक्वल साइज यूनिट. हियर दे हैव मेजरमेंट्स ऑन स्केल ऑफ इक्वल साइज यूनिट्स. यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, the values have order, can be positive or negative. रेशियो स्केल में क्या करना? They have inherent 0 point. यहाँ पे वैल्यू कैसे स्पेसिफाई करेंगे? Value can be specified as multiple of ratio of another value. Now let's take example. ध्यान से. अगर मैंने आपसे कहा amount. Now what do you think? Amount is an interval scale or ratio scale बेटा? Amount is interval scale or ratio scale? Any guess? मैंने नोट किया लिखा हुआ है. चलो मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1 का कॉस्ट 100 रुपीज है, ऑब्जेक्ट 2 का कॉस्ट 1000 रुपीज है, बराबर. कैन यू एक्सप्रेस दिस इन रेशियो? कैन यू से ऑब्जेक्ट 2 इज 10 टाइम कॉस्टलियर देन ऑब्जेक्ट 1? कैसे लिख सकते हो? कैन यू एक्सप्रेस दिस रिलेशन इन रेशियो? एग्जैक्टली. हेलो, यस और नो? यस और नो? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं टेंपरेचर, समझो ऑब्जेक्ट 1 का टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जेक्ट 2 का टेंपरेचर है 50 डिग्री सेल्सियस. क्या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कूलिंग होना? जैसे एग्जांपल अभी समझो इस समय एग्जांपल मुंबई में ठंडी पड़ेगी, मुंबई में ठंडी टेंपरेचर अराउंड 20 डिग्री है ना, 20 टू 24 डिग्री है, हमारा टेंपरेचर अराउंड 20 डिग्री, बराबर है कि नहीं? तो हम मुंबई का एवरेज टेंपरेचर ड्यूरिंग विंटर से अराउंड 25 डिग्री. गर्मी में कितना होगा? 35 डिग्री, बराबर. अगर मैं तो 50 डिग्री मतलब मुंबई में पहुंच गया भाई, लेकिन मुझे गर्मी में लगती है बहुत ज्यादा लगती है, ठंडी में 25 डिग्री, और वही टेंपरेचर 35 हो गया. तो आपको उसको बताइए रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, एग्जैक्टली 2 टाइम हो गया. इन मैसेज को टाइम मैसेज कि अगर इस समय 25 डिग्री है और यूएई में चले जाओगे 50 डिग्री है, तो इस एग्जैक्टली 2 टाइम हो गया, 100 मिनट लगेगा. इन मैसेज को टाइम करने द टेंपरेचर इज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रेशियो. तो ऐसा नहीं कह सकते, कैन नॉट से दैट object 2 is exactly 2 times warmer than object 1. इसलिए आप इसको रेशियो में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो ये जो टेंपरेचर होगा इसको हम बोलेंगे इट इज इंटरवल स्केल, और ये जो अमाउंट है ये रेशियो में रिप्रेजेंट उसको कहते हैं इट इज रेशियो स्केल. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर कोई चीज 100 रुपए की हो 200 हो गए, एग्जैक्टली बोल सकते हो ये 2 गुना बढ़ गया. लेकिन टेंपरेचर अगर 25 50 हो गया तो छोड़ना पड़ेगा, रेशियो बढ़ेगा. समझ नहीं? हम ये बोल सकते हैं जितना 25 डिग्री में कभी थोड़ा सा उसका डबल करके हमको 50 डिग्री में हो रहा है. कैन यू से दैट? हेलो, अरे भाई कुछ बोलो. क्या ऐसा कह सकते हैं कि जितना गर्मी हमको 25 डिग्री में लगा था उसका डबल गर्मी हमको 50 डिग्री नहीं, हमको 100 डिग्री लगेगा. सही है. परसेप्शन बेस के लिए एग्जैक्टली मैं परसेप्शन रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा. समझे? तो रेशियो में कोई क्वांटिटी कैसे रेफरेंस क्वांटिटी हो सकता है? हां, जिसको एग्जैक्टली उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ, जैसे कॉस्ट, वेट, बराबर. इट कैन स्केल में बेटा रेशियो में. सही है. परसेप्शन यस. इतना इक्वल साइज यूनिट्स, तो अगर कॉस्ट 100 रुपए है और 200 हो गया तो अमाउंट एग्जैक्टली 2 गुना बढ़ गया. लेकिन टेंपरेचर 25 50 हो गया तो वॉल्यूम एग्जैक्टली 2 गुना नहीं बढ़ा है. समझ गए? तो हमने यहां क्या लिखा कि सर आप कहां कहां से शुरू की? हमें कहां से शुरू की? हमको क्वेश्चन करना है. क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डिस्टेंस निकालना है. बिंग ऑब्जेक्ट. जिन ऑब्जेक्ट के पीछे डिस्टेंस कम होंगे वही क्वेश्चन में रहेंगे, जिनके ऑब्जेक्ट के पीछे डिस्टेंस ज्यादा होंगे वो अलग क्वेश्चन में जाएंगे.
बट सर डिस्टेंस कैसे निकाला जाए? डिस्टेंस निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, पर डिस्टेंस निकालने से पहले हमको ये देखना था कि भाई डिस्टेंस निकालने से पहले ये तो देखो कि वेरिएबल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई कहानी की शुरुआत हुई हमारे नॉमिनल से, जिसमें कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, फिर बाइनरी हो गए, नॉमिनल एग्जैक्ट 2 कैटेगरीज, फिर अगर नॉमिनल की कैटेगरीज को हम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो क्या हो गया? ऑर्डिनल हो गया, ठीक है। फिर आ गया हमारी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में 2 आ गया हमारा इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल, एट्रिब्यूट्स और फीचर्स। इज दिस क्लियर? यस। हाँ सर। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल रeview, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस। अब मैं अलग तरीके से डिस्टेंस मेजर्स, डिस्टेंस मेजर्स पे क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्या पढ़ेंगे बेटा? तो ये cluster of objects, we need to calculate distance between all pair of objects। और ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस का मतलब डिसिमिलैरिटीज, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस मेजर्स यूज्ड टू डिटरमाइन डिसिमिलैरिटीज between the objects in the data set, determine dissimilarities between the objects in the data set। और ये हमको represent कैसे करेंगे? The calculated dissimilarities are represented using a matrix, हम matrix यूज करेंगे using a matrix structure called as, इसको हम distance matrix करेंगे या हम इसको adjacency matrix करेंगे और इसको हम dissimilarity matrix भी कह सकते हैं। एग्जांपल तो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, मेरे को 4 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है। वी हैव ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। आल्सो ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4। ये क्या होगा? अच्छा, हर ये वैल्यूज को आप देंगे, ये 0 होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेम ऑब्जेक्ट ऑलवेज 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 2 1, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 3 1, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 3 2, इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 4 and 1, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 4 and 2, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 4 and 3। ओके, अच्छा ये वैल्यूज बिटवीन दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 1 and 2, बट डोंट थिंक सेम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 2 and 1। हम इसको हमेशा लोअर एंगल लिखेंगे बेटा। This is distance between 1 2 probability calculated, distance between 1 3 probability calculated between 3 1, distance between 1 4 probability calculated, distance between the object 1 4 is same as, so let me tell you, distance between ith and jth object is 0 if I equals to j, and it is mod of I minus j if I is not equal to j, and can we say d of ij is same as d of ji when I is not equal to j? Do you understand this everyone? हम इसे लोअर एंगल क्यों कर रहे हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत बेटा? हाँ, हम इसी मैट्रिक्स फॉर्म में ही आगे डिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को हम डिस्टेंस मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स या डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? यस भाई, एनी कंफ्यूजन? चलो सर आपने फर्स्ट पॉइंट में पहले लिखा है उसका मतलब क्या है? मतलब 1 1 1 2 1 का 4 ऑब्जेक्ट, मेरे को पता है कौन सा ऑब्जेक्ट में आएंगे, तुमसे पता करना है हर ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। अब जब तक मैं हर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करूंगा, फिर कैसे पता चलेगा? तीसरा डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है, पहले नहीं हो रहा है ना। यस समझ रहे हो? कोई दिक्कत? हेलो, ये समझा। ओके ना, ओके हम देखते हैं डिफरेंट फिलॉसफी थी। हम देखते हैं कि एक्चुअली डिस्टेंस कैलकुलेट करते कैसे। हमने कहा अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं। चलो देखते हैं नॉमिनल वेरिएबल्स के डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नॉमिनल वेरिएबल्स प्लीज ध्यान से करिए। नॉमिनल वेरिएबल गिवन या आपको या मेरे साथ सॉल्व करके बचाया। आई वांट यू टू सॉल्व दिस विद मी। जस्ट राइट डिस्टेंस मेजर्स, राइट डिस्टेंस मेजर्स फॉर नॉमिनल वेरिएबल, फॉर नॉमिनल वेरिएबल, सॉरी, राइट डिस्टेंस मेजर्स फॉर नॉमिनल वेरिएबल। आई वांट यू टू सॉल्व दिस विद मी फास्ट। राइट डिस्टेंस मेजर्स फॉर नॉमिनल वेरिएबल्स। ओके ओके चलो और भी अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स, हमने 2 ऑब्जेक्ट दिए, गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स I and j with p variables, पहले से p variables का मतलब क्या बेटा? ये सारे p variables कौन से होंगे? नॉमिनल टाइप्स। ओके, डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट I and j will be p minus m upon p, where m is नंबर की बात नहीं समझेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच I and j are in same state। प्लीज नंबर को एक्सप्लेन करें फास्ट फास्ट। Now let us take example. Let us take example. Now समझो मेरे पास ये क्या आपने, मैं बोला p क्या है, n क्या है, नंबर n है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर व्हिच I and j are in same state। p हमारे नॉमिनल टाइप्स है। ये क्या आपने क्या एक एग्जांपल इसको सॉल्व करें? यस और नो? ओके चलो। नाउ सपोज वी हैव एग्जांपल। हम पर्सन आईडी and you have marital status and you have nationality. We have person ID 1,
person ID 2, person ID 3, person ID 4 and person ID 5. Somebody married है, ये सिंगल है, ये डिवोर्सी है, ये भी मैरिड है, ये सिंगल। अच्छा, ये सारे नॉमिनल वैल्यूज है। मैरिड सिंगल, इनका कोई ऑर्डर नहीं बनता है। इसकी नेशनलिटी इंडियन है, ये अमेरिकन है, वापस इंडियन है, वापस फ्रेंच है एंड वापस अमेरिकन है। नो, ये कैटेगरीज बेटा हम, और दो से ज्यादा वैल्यूज हैं तो ये बाइनरी नहीं है। मैरिड सिंगल डिवोर्सी 3 वैल्यू है, कैटेगरीज है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनलिटी इंडियन, अमेरिकन, फ्रेंच 3 है, बाइनरी नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या देंगे? नोट क्या है? मैरिटल स्टेटस एंड नेशनलिटी, बोथ आर व्हाट? बोथ आर नॉमिनल वैल्यूज। ओके, अब आगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बोला? आई एन जे टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट का 5 वो है बेटा। मेरे को पता करना है कि ये 5 में से कौन से हैं जो सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, जिनके डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होंगे। ओके, तो चलिए, पी वेरिएबल, पी इज द नंबर ऑफ नॉमिनल टाइप्स। ओके, टोटल कितने वेरिएबल्स हमारे पास? वेरिएबल का यहाँ होता है एट्रीब्यूट्स। तो पी क्या होगा यहाँ पे बेटा? कितने एट्रीब्यूट्स चाहिए? मैरिटल स्टेटस एंड नेशनलिटी। पी इज 2, समझा कि नहीं? और एम क्या है बेटा? एम इज काउंट ऑफ 2 वेरिएबल्स और हाउ मेनी द 2 टपल्स और ऑब्जेक्ट हैव सेम वैल्यू। लेट्स सी एग्जांपल। सो मुझे क्या करना है? मुझे 5 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो चलो 5 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालेंगे। 5 ऑब्जेक्ट है, प्लीज एवरीवन। लेट्स सी। Object 1, object 2, object 3, object 4, object 5. Object 1, object 2, object 3, object 4, object 5. चलो, मेरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला d of ij is p minus m upon t। मेरा फॉर्मूला क्या है? d of ij is p minus m upon t, करेक्ट? p minus m upon t। तो सबसे पहले चलो, व्हाट इज डिस्टेंस? ये तो 0 होगा, ये सारे 0 होंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 1, 2, 1 का रो नंबर 1, रो नंबर 2। चलो भाई, रो t का वैल्यू कॉमन है, p का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या होता है? रो नंबर 1, रो नंबर 2। प्लीज ध्यान से देखना, पेन समझ में आएगा। रो नंबर 1, रो नंबर 2 दोनों रो में वेरिएबल कौन है? मैरिटल स्टेटस एंड नेशनलिटी। ये दोनों वेरिएबल में पहले मैरिटल स्टेटस में ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वैल्यू क्या है? मैरिड। ऑब्जेक्ट नंबर 2 का वैल्यू क्या है? सिंगल। आर दे हैविंग सेम वैल्यू मैरिटल स्टेटस? नो। चेक द नेशनलिटी। नेशनलिटी इंडियन है, अमेरिकन है। आर दे हैविंग सेम वैल्यू नेशनलिटी? नो। सो m वैल्यू इज 0। इसका मतलब दोनों ही रो में ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, दोनों ही रो के दोनों ही कॉलम के वैल्यू सेम नहीं है। सो इट इज काउंट ऑफ द 2 वेरिएबल फॉर हाउ मेनी द 2 टपल्स हैव सेम वैल्यू। यानी ये दोनों वेरिएबल में ये दोनों टपल के कितने कॉलम के वैल्यू सेम है? एक भी कॉलम के वैल्यू सेम नहीं है। कितने कॉलम है? 2। मैरिटल स्टेटस दोनों के वैल्यू सेम नहीं है, नेशनलिटी में भी दोनों के वैल्यू सेम नहीं है। m 0 है तो क्या बन जाएगा बेटा? p यानी 2 - 0 upon 2, आंसर विल बी 1। इधर आ गया 1। सेकंड, अब हम देखेंगे 3 1, d हो गया 1 3 1 3। चलिए, रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 1, रो नंबर 3, मैरिटल स्टेटस दोनों सेम है? नहीं। नेशनलिटी दोनों सेम है क्या? नेशनलिटी दोनों सेम है क्या? बोलो यस। तो इसका मतलब 2 में से कितने कॉलम में दोनों के वैल्यू सेम है? 2 में से कितने कॉलम में दोनों के वैल्यू सेम है? एक कॉलम, तो n का वैल्यू होगा 1। 2 कॉलम है, रो नंबर 1, रो नंबर 3, बट कॉलम नंबर मैरिटल स्टेटस में एक मैरिड, एक डिवोर्स है। नेशनलिटी दोनों इंडियन है। मेरा आंसर है 2 - 1 upon 2, दैट इज 1 upon 2.5। इधर आएगा 0.5। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन 2 3 2 3 2 3 2 3 2। सिंगल डिवोर्सी अलग है, अमेरिकन इंडियन अलग है, तो m is 0, 2 - 0 upon 2, आंसर इज 1। आपको समझ में आ रही है मैंने कैसे कैलकुलेट किया? यस और नो? आई एम गेटिंग दिस? हाउ यू कैलकुलेट दीस वैल्यूज? हेलो, तो चलो बाकी सारे वैल्यूज फटाफट, चलो 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 सारे वैल्यूज टेक नेक्स्ट फिल वैल्यूज फास्ट। चलो नेक्स्ट बोलो, और बटन क्या बेटा? कम ऑन, n का वैल्यू बताओ। रो नंबर 1, रो नंबर 4। 1 हां, 1 आएगा। 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 by 2, 0.5। ये हो गया 0.5, ठीक है। फिर नाउ डिस्टेंस बिटवीन 4 2, m क्या है? is 0, so क्या हो जाएगा? 2 - 0 by 2, 1। देन डिस्टेंस बिटवीन 4 3, m is 0 0, 4 - 0, sorry, 2 - 0 upon 2, 1। नाउ 7, डिस्टेंस बिटवीन 5 1, m क्या है? 0 तो क्या हो जाएगा? 2 - 0 upon 2, 1। नेक्स्ट 5 2, m क्या होगा? 2 2 2, m is 2, 5 और 2, मतलब दोनों भी सिंगल है, दोनों भी अमेरिकन है। ओके, तो इट इज 2 - 2 upon 2, आंसर इज 0। देन 9th, डिस्टेंस बिटवीन 5 3 is m is 0, m is 0, आंसर 1। अच्छा आंसर हाँ तो 1। एंड 10th is डिस्टेंस बिटवीन 5 4, m is 0, so 2 - 0 upon 2 is 1। अब ये इन सब में कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, कौन से बोलोगे जो सबसे ज्यादा करीब होंगे? 2 5 1 3 1 एग्जैक्टली 2 5 सबसे ज्यादा करीब होंगे। समझा? क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है? 0 0। तो अगर आपके पास नॉमिनल वैल्यूज हैं तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालेंगे डिस्टेंस। यहाँ 2 कॉलम है, अगर 3 कॉलम होते तो p का वैल्यू क्या होता? 3। फिर तीनों में से कितने कॉलम है वो वैल्यू यूज करते? कोई कंफ्यूजन? यस, एक कंफ्यूजन समझ आपको इसके कैलकुलेट वैल्यूज? हां चलो, कैन यू गो फॉर अनदर टाइप बाइनरी वेरिएबल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना आपको। मेजर्स फॉर बाइनरी वेरिएबल्स गिवन 2 ऑब्जेक्ट्स I and j with p variables। मेरे मतलब समझ आएगा एट्रीब्यूट्स कॉलम्स। डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। ये रहा ऑब्जेक्ट j, ये रहा ऑब्जेक्ट i। 1 0 1 0, यहाँ लिखा q, यहाँ लिखा r, यहाँ लिखा s, यहाँ लिखा t। व्हाट इज q? व्हाट इज q? जहां ऑब्जेक्ट i और j दोनों 1 है। व्हाट इज r? जहां ऑब्जेक्ट i 1 है लेकिन j 0 है। व्हाट इज s? जहां ऑब्जेक्ट j 1 है लेकिन i 0 है। व्हाट इज t? जहां दोनों 0 है। सो q इज नंबर ऑफ वेरिएबल। दिस फीचर इसको सॉल्व करना है फॉर व्हिच बोथ ऑब्जेक्ट्स i and j are in state 1 are
number of variables for which object I in state 1 and object j in state 0 s number of variables for which object I in state 0 object j in state 1 and t number of variables for which object I and j are in state 0. बट प्रॉब्लम ये बड़ा क्वेश्चन पूछेगा सर ऐसे नॉमिनल वेरिएबल्स होंगे जिनको सिर्फ दो ही स्टेट पॉसिबल है। हम आप बोले सर आप बोले बाइनरी वेरिएबल्स नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं जिनके दो ही स्टेट पॉसिबल है। तो सर अगर मेरा मेल और फीमेल ऐसा दो स्टेट है तो हम इसको 1 और 0 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके बाइनरी वैल्यूज हैं कन्वर्ट दी बाइनरी एट्रीब्यूट वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ 1 and 0 आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये इससे आंसर नहीं मिलेगा, इससे आंसर नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको बाइनरी वेरिएबल्स दिए हैं आप सबसे पहले QRST का वैल्यू निकालेंगे, QRST का वैल्यू निकालेंगे। QRST का वैल्यू निकालने के बाद इफ बाइनरी वेरिएबल आर सिमेट्रिक then the distance between object I and j will be r plus s upon q plus r plus s plus t। लेकिन अगर जो बाइनरी वेरिएबल्स हैं अगर असिमेट्रिक हैं then जो डिस्टेंस बिटवीन i and j होगा न्यूमरेटर सेम होगा r plus s, डिनोमिनेटर q plus r plus s। यहाँ पे t नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि t क्या बताता है वो स्टेट जहां दोनों जीरो हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि जब तक ये आपको नहीं पता चलेगा आप करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेट QRST वैल्यूज एंड देन कैलकुलेट डिस्टेंस। बट कैलकुलेट डिस्टेंस में आपके दो तरीके हैं। हमने देखा था कि अगर इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा अगर मुझे एकेडमिक परफॉर्मेंस जज करना है तो जेंडर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी वहां मेल हो या फीमेल दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में कैटेगराइज करूंगा तो जेंडर इंपॉर्टेंट है यानी दोनों इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। प्लीज ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आपको करेक्ट QRST ये बात मैंने नहीं चलेगा क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये मैट्रिक्स आपको समझ में आएगा कि QRST क्या कहता है। जस्ट लिखिए डिस्टेंस मेजर फॉर बाइनरी वेरिएबल्स, राइट दिस डिस्टेंस मेजर फॉर बाइनरी वेरिएबल्स। ये बना लीजिए QRST का वैल्यू क्या होगा, q दोनों 1 r 1 0 s 0 1 फॉर ऑब्जेक्ट i to j t मतलब दोनों 0। अब ये फॉर्मूला लीजिए प्लीज और फिर मैं एग्जांपल दूंगा उसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डन, let us solve example. Consider patient data set. Patient ID, fever, cough, then test 1, test 2, test 3 and test 4. Please note कीजिए 1 2 3 people yes yes yes, cough no yes no, test 1 positive negative positive no negative 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 positive negative negative negative। चलो इसका डिस्टेंस निकालना है। ओके सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा इसमें हम क्या करेंगे स्टेप 1 कन्वर्ट yes to 1 no to 0 and positive to 1 negative to 0। ठीक है, अगर मैं ये कन्वर्जन करूंगा तो अब मुझे क्या मिलेगा this is 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 बराबर। अब कितने वेरिएबल्स हमारे पास, कम ऑन चलो अगर 6 वेरिएबल आई को छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहना। ठीक है अभी बात बताइए, अब ये बात करना सिमेट्रिक है या नहीं, बराबर सिमेट्रिक है या नहीं, बराबर। चलो नाउ टू चेक फॉर सिमेट्रिक और कौन से वेरिएबल सिमेट्रिक। चलो सबसे पहला फीवर, अभी बात बताओ फीवर है या नहीं, तो इसका मैं मेडिसिन चेक करूंगा या कौन से जगह पे नॉट स्पेसिफिक एग्जाम फीवर है या नहीं, कैसे मेडिसिन होगा इसके लिए जितने को फीवर सबसे मेडिसिन देंगे। हां 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 यहां पे बहुत सारे फीवर नहीं फीवर है या नहीं सबसे मेडिसिन नहीं मिलेगा, कफ है या नहीं सबसे मेडिसिन नहीं मिलेगा, तो इट इज लाइक सेम मेडिसिन नहीं होगा। अच्छा 10 तीसरा टेस्ट 1 2 3 4 बेटा इन चारों टेस्ट में रिजल्ट सबके सेम है या अलग है, सेम मेडिसिन नहीं होगा। तो अगेन रिजल्ट्स कभी ऐसा नहीं सेम है या नहीं, सेम मेडिसिन नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक, इसका मतलब हमारे हर चीज इंपॉर्टेंट है। कैन यू अंडरस्टैंड, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब असिमेट्रिक है, ऑल 6 वेरिएबल्स आर असिमेट्रिक। चल अब ये जो मेरा कंडीशन आ गया कि ये लोग असिमेट्रिक हैं तो चलो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तीन है हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 ऑब्जेक्ट नंबर 3, तीन ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 ऑब्जेक्ट नंबर 3। चल सबसे पहले हम बात करेंगे 0 0 0 आएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट 2 1। तो 2 1 पहले 2 और 1 देखिए उसमें मुझे QRST का वैल्यू बताइए। चलिए क्यों मतलब जहां दोनों 1 है यानी समझना 2 2 1 डायरेक्ट 2 2 1 डायरेक्ट। चलो 1 2 में दोनों 1 कितनी बार है, एक दोनों 1 एक बार है, 2 1 है सॉरी 2 0 है 1 1 है कितनी बार है, 2 0 1 1 2 0 1 1 एक बार है, 1 0 2 1 कितनी बार है, 1 0 0 1। अरे ये सही है सेशन ये सॉन्ग बोलना तो 1 0 एक बार 0 1 एक बार, दिस इज 1 दोनों 0 कितनी बार, एक दो तीन बार दोनों 0। सो डिस्टेंस बेटा असिमेट्रिक, असिमेट्रिक में इंपॉर्टेंट नहीं है, असिमेट्रिक में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो r प्लस s का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, जो दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, एक 0 1 है एक 1 है एक 0 है। इसमें क्या आएगा q प्लस r प्लस s क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 2 अपॉन 3 0.67। तो यहां चलेगा 0.67। आई होप यू गॉट इट, हाउ वी कैलकुलेटेड, यस और नो आपको समझा कैसे कैलकुलेट किया है। हेलो हां सर
चलिए बाकी सब कैलकुलेट कीजिए फटाफट, दो ही और कैलकुलेट करने बस। डिस्टेंस 3 1 कैलकुलेट कीजिए, देन वी एंड द लेक्चर, और डिस्टेंस 3 2 कैलकुलेट कीजिए। चलिए फटाफट, चलिए फास्ट। हमरा 3 1 क्या है? टी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों आया क्लास में ठीक है? क्यों कर वैल्यू हमरा कम ऑन, ऑब्जेक्ट 3 और 1 दोनों कितनी बार है? ऑब्जेक्ट 3 1 दोनों कितनी बार है? तो बच्चा बात बुझ ही नहीं रहा है यार, ये सब 1 3 1 दो बार है, ये 0 है, ये 1 तो आंसर आएगा 0 + 1 अपॉन r + s अपॉन 2 + 1 1 अपॉन 3 0.33, और 3 2 में 2 का वैल्यू क्या आएगा 1, r का वैल्यू 1, s का वैल्यू 2 आएगा, तो क्या आएगा r + s यानी 1 + 2 अपॉन 1 + 1 + 2 दैट विल बी 3/4 दैट विल बी 0.75। इज दिस क्लियर? समझ में आपको? 0.5 करने कैसे है? ओके, समझ में आ रहा है? जो डिस्कस किया, हाउ कैलकुलेट डिस्टेंस विद द डेटा टाइप इज नोन, डेटा टाइप वेरिएबल्स आर नोन, यस और नो? यस, चलो लेट अस फॉलो द सेशन, वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, द नोट्स विल बी इमीडिएटली अपलोडेड इन द ड्राइव। चलो, कैन यू कॉल ऑफ? Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। सिंगल अमेरिकन सिंगल, ओके। अगर 4 5 देखो 4 5 तो मैरिटल स्टेटस में सेम है, दोनों सिंगल है और नेशनलिटी दोनों अमेरिकन है। ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने दूसरा देखा, जिसको लास्ट में इन लास्ट लेक्चर, कि अगर मेरा बाइनरी वेरिएबल से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम हैव टू आर एस की वैल्यू 2 मतलब जब दोनों 1 है, 3 मतलब जब दोनों 0 है, r मतलब i1 0 है, हमने ये सॉल्व किया। ये मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया, सॉल्व किया। यहां पे सब ठीक है बेटा? हेलो, ऑल गुड टिल नाउ? यस, चल लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन DWM लेक्चर 10 नोट्स। चल मैं लॉक करता हूं एंड नाउ वी विल स्टार्ट। सर अभी तो हमने सारे वेरिएबल्स देखे नहीं है सर, हमारे फंक्शन वेरिएबल्स बाकी हैं। हमने कहा हमको तीसरा और न्यूमेरिक वेरिएबल, सर वेरिएबल टाइप न्यूमेरिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो न्यूमेरिक वेरिएबल देख रहे हैं, या फिर आपको कुछ लगने में काम आ जाएगा, ठीक है? क्लस्टरिंग में काम आ जाएगा। न्यूमेरिक वेरिएबल कैसे निकालेंगे? और 2 ऑब्जेक्ट्स I and J, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है I and J with P न्यूमेरिक वेरिएबल, I and J with P न्यूमेरिक वेरिएबल्स, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट में P वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स का टाइप न्यूमेरिक है। वेरियस डिस्टेंस मेजर्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल के डिस्टेंस निकालने के लिए अलग अलग बहुत तरीके हैं। आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है I and J, इसलिए एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सारे न्यूमेरिक बहुत इजी है। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है I and J, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है I and J, I में कुछ वेरिएबल है, J में कुछ वेरिएबल है, तो इनका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे होगा? x I का वन वेरिएबल माइनस x j का फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है? प्लस x I का सेकंड माइनस x j का सेकंड स्क्वायर। ऐसे काम करेंगे बेटा, x I का nth माइनस y j का nth का स्क्वायर। तो इसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हो। अगर मैंने कहा I j, I में एट्रिब्यूट है a1 a2 a3 a4 5 2 3 1 2 2 1 1, क्या आएगा डिस्टेंस? I और j का बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्या होगा? इसका पहला माइनस इसका पहला, I माइनस 2 द स्क्वायर, इसका माइनस इसका 3 माइनस 1 द स्क्वायर, इसका माइनस इसका 2 माइनस 2 द स्क्वायर, इसका माइनस इसका 1 माइनस 1 द स्क्वायर। ये होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट I and J, और इन ऑब्जेक्ट्स के पास n फीचर होंगे। I ऑब्जेक्ट के पास n फीचर होगा I1 I2 to In, J ऑब्जेक्ट के पास n फीचर होंगे J1 J2 to Jn। ये हो गया पहला। दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस। तो मैनहट्टन डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं,
अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है i, j, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी ith का वन वेरिएबल माइनस jth का फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंस अमाउंट प्लस x i2 minus y j, sorry x j2 plus x I n minus x p, सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। तो अगर आपको एग्जांपल वाला एग्जांपल करेंगे i minus 2 plus mod of 3 minus 1 plus mod of 2 minus 2 plus mod of 1 minus 1, that will be the Manhattan distance। तीसरा है बेटा mean cosine distance, we have mean cosine distance, कहाँ बेटा y j है, अच्छा हाँ ये sorry ओके ओके, now mean cosine distance कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रखेंगे i j is root of h x i1 minus x j1 raised to h plus x i2 minus x j2 raised to h x r n minus x j n raised to h। now अगर आप mean cosine difference देख रहे हैं तो ये देखिए मुझे याद आ रहा है बेटा in mean cosine distance if h is equal to 2 it becomes what, बोलो, it becomes which distance, Euclid, perfect, it becomes Euclid। so this is the formula for mean cosine difference। now let us export the technique for numeric is supremum distance। the next is supremum distance, ये क्या कहता है बेटा, b of I comma j is max of x I f minus x j f, sorry एक सेकंड बेटा, हेलो 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 आ जाएगा Yes. h h क्या बेटा, एक मिनट, जब इसमें ट्रांसलेशन है सही छोड़ देंगे इसमें, तो यूक्लिड डिस्टेंस लिखने फंक्शन जीरो, अरे बेटा तो मैंने ऐसा करके h2 ना, अच्छा यूक्लिड में h2 ना, तो उसने पूरा बेटा ठीक है, ओके हां सुप्रीम डिस्टेंस देखिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए max d of ij is max of max f of x of I minus x of jf, and we will solve this over p variables, we will solve this over p variables। so p variable का किसमें p variable का p features का p dimension। let me try to explain you this one example, you understand, okay, you understand example, okay, so मैंने कहा x1 is 1,2, x2 is 3,5, okay okay, now इसमें the distance सुप्रीम कितना होगा बेटा, ये देखो बेटा, बोलो yes sir, ये देखो सुप्रीम maximum distance, basically इसका मतलब क्या है, f is the number of dimension बेटा, basically क्या कहता है, find distance in each dimension and हर dimension क्या निकालिए, distance निकालिए and identify the maximum। so supreme distance क्या होता है बेटा, it is maximum of if x I और f is the particular dimension, तो ये क्या होगा, distance 1 minus 3 comma 2 minus 5, बताओ तो ये क्या होगा, it is maximum of, it is what it is, the difference in first dimension and this is difference in second dimension, so the max of 2 comma 3 that will be 3। so this is very straightforward formula। so ये काफी काम वाला है आपको फ्यूचर में भी, अगर आपके डेटा टाइप में वैल्यूज हैं तो हम कितने टाइप से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, मीन कोस्की डिस्टेंस एंड सुप्रीम डिस्टेंस। अब हम कौन सा कब निकालना चाहिए, हम ये कैसे चेक करेंगे कि कौन सा कब निकालना चाहिए, वी कैन यूज एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन एल्गोरिथम क्या यूज किया है, एल्गोरिथम ने क्या यूज किया है, okay, so this was about numeric values। so what about ordinal values, this is 4, let us talk about distance in ordinal values। now again ordinal comes order is important, yes, come down if there are m state of variable, there are n state of variable, then replace the value by corresponding rank, so the rank will belong to, there are m state ना, so rank will be any one value from 1 to m, rank will be any one value from 1 to m। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके जो m state वेरिएबल है उन वेरिएबल्स को पहले आप रैंक असाइन करेंगे, फिर आप नॉर्मलाइज करेंगे, normalize the rank is normalized करेंगे, let n be the normalized rank, it is r minus 1 upon m minus 1, this is the formula that we will use to normalize the rank in case of ordinal value। तीसरा calculate the distance using अब आप इसको रैंक में कन्वर्ट करके न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, आपने रैंक में कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया, न्यूमेरिक वैल्यू डिस्टेंस निकालने के हमने बहुत सारे अलग-अलग तरीके देखे हैं, उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग एनी मेजर यूज्ड फॉर
numeric values. So let me ask you to solve this question. Question है find distance और given क्या है रोल नंबर दिया गया है और ग्रेड रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 रोल नंबर 4 ग्रेड है A B C A ठीक है चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन लिख लीजिए नाउ A B C है ऑर्डिनल वैल्यू A B C ये ऑर्डिनल वैल्यू है तो इस केस में मुझे बताइए कितने स्टेट्स हैं we have three states A B and C so मेरे पास इसमें 3 रैंक होंगे देखिए पहला पॉइंट क्या है if there are n states of variable replace the value by corresponding rank तो rank R will belong to any one of the values from 1 to n अगर ये मैं एग्जांपल आपको बोल रहा हूं कि ये A B C सबसे पहले मैं देख रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो ऑर्डिनल वैल्यूज हैं तो सबसे पहले ऑर्डिनल वैल्यूज का मतलब स्टेट्स कितने हैं we have 3 states please note please do it in the सॉल्व कैसे करना है अभी बताओ मुझे तो समझ में आ रहा है कितना लिखोगे क्या ओके चलो देखो तो सबसे पहले स्टेप लगेगा रिप्लेस द वैल्यू बाय करस्पॉन्डिंग रैंक तो मैं इसमें क्या देता हूं असाइन रैंक फॉर स्टेट्स रैंक कैसा लगेगा हमने एबीसी को क्या दिया मैं इसको रैंक दे देता हूं कितना जैसे एक रैंक दे दिया 3 b4 2 c4 1 अब 1 2 3 देखो मैंने 3 को इज हाईएस्ट तो इसको 3 दे दिया तो अब ये क्या बन जाएगा न्यूमेरिक नंबर हो गया तो ऑर्डिनल हमेशा आपको याद रखना है इसको न्यूमेरिक रैंक में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 and 4 तो अब रैंक का 3 2 1 3 अब नेक्स्ट क्या होगा नॉर्मलाइज रैंक अब रैंक को क्या करोगे नॉर्मलाइज करो नॉर्मलाइज द रैंक कैसे नॉर्मलाइज किया आपने रोल नंबर 1 2 3 and 4 okay now first one is saying is r minus 1 upon n minus 1 n is number of rank n का वैल्यू कितना 3 तो इसका वैल्यू क्या होगा बताइए r minus 1 what is rank 3 minus 1 upon n minus 1 3 minus 1 it is 2 upon 2 आंसर 1 जाएगा 1 इसका कितना आएगा r minus 1 2 minus 1 upon 3 minus 1 it is 1 upon 2 क्या जाएगा 0.5 इसका क्या आएगा 1 minus 1 upon 3 minus 1 0 by 2 आंसर 0 इसका क्या आएगा 3 minus 1 upon 3 minus 1 2 by 2 आंसर 1 समझ गए नॉर्मलाइज किया यस तो इसका अच्छा मोमेंट कहां से मिलेगा ये बात समझ मोमेंट हमको लगा ऑर्डिनल वैल्यू इसमें छोटा सा एग्जांपल लिया है मेरी वैल्यू से मैंने अलग फार्मूला दिया है यूक्लिडियन मैनहट्टन मीन उसकी एग्जांपल ये बहुत सिंपल था ये जो मैंने बताया था ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑर्डिनल के लिए लिखिए कि आप ऑर्डिनल में आपको बताया ऑर्डिनल इंपॉर्टेंट आंसर स्टेट्स रहेंगे अगर n स्टेट है तो सबसे पहले आप उसको स्टेट्स को करस्पॉन्डिंग रैंक कन्वर्ट कीजिए फिर रैंक को नॉर्मलाइज कीजिए तो जैसे मुझे एग्जांपल दिया मेरे रिजल्ट में लिखे स्टेट है a b c a तो यूनिक स्टेट कितने का a b c 3 स्टेट है मैंने तीनों को एक रैंक दे दिया और ये हाईएस्ट मैंने 3 दे दिया मैं वैल्यू सबसे 3 रैंक तो मैंने रैंक दे दिया 3 2 1 तो यहां मैंने स्टेप 1 को रैंक असाइन कर दिया अब मुझे रैंक को करना है नॉर्मलाइज करना है मुझे फार्मूला दिया गया नॉर्मलाइज r वैल्यू r - 1 upon n - 1 यहां n का वैल्यू 3 है नंबर ऑफ स्टेट r का वैल्यू कितना है 3 क्या 3 - 1 upon n का वैल्यू 3 है 3 - 1 upon 3 - 1 आंसर 1 यहां r कितना है 2 2 - 1 upon 3 - 1 सिमिलरली यहां पे क्या रहेगा तो बस यहां पे लेट मी ब्रेक डाउन ओके तो डिस्कस करो इसमें बड़ा 4 पॉइंट्स है ना बस पहले ये तो सीखो नहीं उसको पता है तो कोई भी मेथड निकालो कोई भी मेथड निकालो कोई भी मेथड निकालो डिस्कस करो ये क्या होंगे m into m matrix होगा यस मैंने डिस्कस कैन यू मैंने तो क्या 2 1 डिस्कस 2 1 1 -1 5 मॉड मॉड क्या 0.5 जाएगा 3 1 1 0 आंसर 1 आएगा 4 1 4 1 1 -1 0 3 2 3 2 0.5 0 0.5 then 4 2 4 2 में 1 and 0.5 is 0.5 4 3 4 3 0 and 1 so it is 1 yes डिस्कस मैंने यूज किया मॉड ऑफ डिफरेंस हो गया तो आपको एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं करेंगे आप यूज कर सकते हो इज दैट क्लियर यस okay thank you let us go ahead and let us talk about clustering algorithm important let us talk about clustering algorithm now आप ये समझोगे कि सभी क्लस्टरिंग चालू क्यों किया मैंने क्लस्टरिंग इसलिए चालू किया क्योंकि आपका डिस्टेंस निकालने का काम हो गया है तो रिमेंबर वन थिंग बिफोर परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग वी मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस so now we know how to calculate the distance we can now study on some clustering algorithm तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पार्टीशनिंग बेस्ड अप्रोच हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पार्टीशनिंग बेस्ड अप्रोच ये क्या है अगर मेरे पास गिवन सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स दिस एल्गोरिथम decompose the set into k clusters such that k is less than equal to n where obviously n is an object हम बात करेंगे ठीक है आपके पास जो एक सेट है और उस सेट में ध्यान से हमने कहा एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ठीक है और उस सेट में मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है तो वी हैव 1 2 3 4 n ऑब्जेक्ट और ऐसे में नंबर नहीं तो अब ये बताना पड़ेगा कि इसको ऐसे तो वी ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 एंड देन वी ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट और मैंने कहा k इक्वल टू 5 तो पार्टीशन अप्रोच क्या है गिवन सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट n कितना है 10 द एल्गोरिथम डिकम्पोज द सेट इनटू k क्लस्टर्स के मैंने क्या 5 तो ये 5 क्लस्टर बनेगा T1 T2 T3 T4 T5 ये n ऑब्जेक्ट को क्लस्टर बनेगा ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 6 इधर है ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 इधर है ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 7 इधर है ऑब्जेक्ट 8 अलग है इधर है और ऑब्जेक्ट 9 इधर है यस तो हमने ये 10 ऑब्जेक्ट को एक क्लस्टर में डिवाइड कर दिया है k का वैल्यू इक्वल टू n तो अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर आई कैन हैव तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लस्टर maximum number of clusters होते हैं n so now this is c1 c2 c3 c4 c5 c7 c8 c9 c10 तो यहाँ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट 5 ये ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट 7 ऑब्जेक्ट 8 ऑब्जेक्ट 9 ऑब्जेक्ट 10 दिस इज ऑल डाटा से कितना बना सकते हो कितना बना सकते हो ठीक है अच्छा ये जो अगर मैंने कंडीशन दे दिया यहाँ पे कंडीशन है विद कंडीशन
ये जो मैंने आपसे कहा कि k का वैल्यू मैक्सिमम n हो सकता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस विल कम कंडीशन। पहला कंडीशन क्या रहेगा? नो टू क्लस्टर विल ओवरलैप। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल, नो ऑब्जेक्ट विल बी इन मोर देन वन क्लस्टर। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ही क्लस्टर में रहेगा, एक से ज्यादा क्लस्टर में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। और दूसरा कंडीशन है नो क्लस्टर इज एम्प्टी। ऐसा कोई भी क्लस्टर नहीं होगा जिसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मेरा कंडीशन है। सो पार्टीशन अप्रोच कहता है अगर आपके पास एक सेट है जिसमें n ऑब्जेक्ट है, आप इसको k क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हो। k का मैक्सिमम वैल्यू n होगा, सॉरी, वेयर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो क्लस्टर ओवरलैप नहीं करेगा। यस नो, ठीक है, वी कैन ओवरलैप क्लस्टर बट नॉट हियर इन दिस केस। पार्टीशन ऐसा नहीं होगा। वी कैन हियर मैं नोट डाउन हियर हियर, ठीक है, ये क्या कहीं ओवरलैपिंग क्लस्टर नहीं होगा, हो सकता है यहां पे नहीं होगा। बात कर रहे हैं पार्टीशन की तरफ से, हियर ओवरलैपिंग क्लस्टर आर नॉट अलाउड। ठीक है, अब बात रियलिटी में सुनो। पहला देयर आर एल्गोरिथम, ऐसे कहीं अलाउ नहीं होगा, तो स्टेटमेंट मतलब नहीं है। देयर आर एल्गोरिथम दैट अलाउज क्लस्टर्स टू ओवरलैप। नाउ जब मैंने आपसे कहा कि हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हम पार्टीशन बेस्ड अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। जब हम पार्टीशन बेस्ड अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो तरीके हैं हमारे पास। एक है k मींस एल्गोरिथम और दूसरा है k मेथड एल्गोरिथम। ठीक है, नाउ बिफोर वी गो अहेड विद k मींस, कुछ चीजें हमको ये समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी जिसको कहते हैं, मैं नोट ले रहा हूं। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी इज नोन एज ऑब्जेक्ट स्पेस। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी नोन एज ऑब्जेक्ट स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्पेस, इन ऑब्जेक्ट स्पेस इन ऑब्जेक्ट स्पेस ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ some diagrams और graphical representation। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि आप हाइट और वेट कीजिए, मतलब देयर आर सम these are values of weight versus height, और ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो maybe weight and corresponding height of many people, तो ये जो इंडिविजुअल पॉइंट्स लगता है ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ईच, तो यहाँ पे मैं देखूं हियर, ये जो एग्जांपल आपको दिखा है, ईच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन 2D स्पेस। और ऑब्जेक्ट हमने 2D स्पेस रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, 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 विद मेनी such objects in 2D space। मेरे स्टूडेंट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट स्पेस। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं इस टोटल एनवायरनमेंट की बात करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट स्पेस है। ऑब्जेक्ट स्पेस, और ये ऑब्जेक्ट स्पेस मैंने 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया है। तो ईच ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन 2D स्पेस। अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो हम उसे ऑब्जेक्ट स्पेस कहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ मैंने कहा कि पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग में हमारे पास दो तरीका है, k मींस एंड k मेथड्स। k मींस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। k मेथड इज आल्सो इंपॉर्टेंट, k मेथड इज कंप्यूटेशनली एक्सॉस्टिव। इन फैक्ट वी कैन से k मेथड एंड हार्ड। तो मेन हार्ड मतलब क्या है? इट इज एज हार्ड एज द प्रॉब्लम, मतलब इट्स नॉट सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम। एंड क्या होगा? नॉट सॉल्वेबल बट सॉल्यूशन कैन बी वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, हम देखेंगे हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं k मींस क्लस्टरिंग। k मींस क्लस्टरिंग, तो k मींस जो है ये सेंट्रॉइड यानी मीन इसमें सेंट्रॉइड बेस्ड पार्टीशनिंग अप्रोच ऑफ क्लस्टरिंग। यहाँ पे इनपुट क्या दिया जाएगा? यहाँ इनपुट दिया जाएगा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आउटपुट क्या मिलेंगे? आउटपुट आएगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स। कितने क्लस्टर्स? k। नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होगा? k। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, फिर हम एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर इसका हम ये लिखेंगे, क्या बोलेंगे एल्गोरिथम। एग्जांपल है, सॉल्व कीजिए b = 22 9 12 15 10 27 35 18 36 11। और मैंने आपसे कहा है एग्जाम में आ सकता है क्लियर, याद करो ऐसे ही 3 क्लस्टर्स यूजिंग k मींस वेयर k = 3। चल, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इनपुट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने ऑब्जेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्ट है। मुझे इसको करना है, ठीक है, मुझे 3 क्लस्टर बनाने यूजिंग k मींस, तो मैंने k का वैल्यू लिया 3। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो बस चलो स्टेप 1, ठीक है ना? चलो स्टेप 1 कितना क्लस्टर बोला है? 3 क्लस्टर बोला है। तो चलो देखो, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन है 3 क्लस्टर बोला है, तो यहाँ पे क्लस्टर लिखेंगे, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। इन क्लस्टर के लिए सेंट्रॉइड डालें, है ये सेंट्रॉइड बेस्ड पार्टीशन अप्रोच। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको इनिशियली मैं आपको यहाँ पे स्पेशल एल्गोरिथम बताऊं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। एल्गोरिथम k मींस में इनपुट क्या आएगा? सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ क्लस्टर्स k। ये मुझे दिया जाएगा। स्टेप 1 लिखिएगा, एल्गोरिथम स्टेप 1, select a object arbitrarily as initial cluster centroid। यस, स्टेप 1 क्या होता है? आपको k क्लस्टर चाहिए सर, तो आप अपने सेट में से किसी भी k ऑब्जेक्ट को एज एन इनिशियल क्लस्टर सेंट्रोइड अज्यूम कर लो। आप किसी भी, जैसे मेरे केस में कितना लगा है, मुझे लगा है k का वैल्यू 3। तो क्या कहता है? आपके डेटा सेट में से आप किसी भी 3 ऑब्जेक्ट को 3 सेंट्रोइड कंसीडर कर लो। तो लेट्स अज्यूम ये पहले 3 ऑब्जेक्ट ही 3 सेंट्रोइड है, तो यहाँ पे क्लस्टर 1 का सेंट्रोइड 22 होगा, क्लस्टर 2 का सेंट्रोइड 9 होगा। ये 3 ऑब्जेक्ट्स पहले आप क्लस्टर में 22 9 और 12 ऐसा सॉरी क्या होता है? देखो, तीनों क्लस्टर में रैंडमली आप एक ऑब्जेक्ट डालो। तो मैंने 22 9 12 पहले तीनों क्लस्टर में डाल दिया। अब देखो क्लस्टर 1 से कितने रैंडमली आप दूसरा डाल सकते हो, इसका आंसर बदल जाएगा, 100% वही होगा। नो भाई, मैंने अपनी एल्गोरिथम क्या बताया था? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आर्बिट्ररी एज इनिशियल क्लस्टर सेंट्रोइड। तो मैंने तीनों में एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो इस क्लस्टर में एक ही ऑब्जेक्ट 22, तो इसका सेंट्रोइड होगा 22। देन इसका कितना होगा? 9, तो सेंट्रोइड होगा 9। इसका कितना 12, तो सेंट्रोइड होगा 12। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नाउ अब क्या होगा? नाउ कंसीडर ऑल ऑब्जेक्ट्स अगेन एंड रीअसाइन टू क्लस्टर। ये हो गया एल्गोरिथम का स्टेप 2 क्या होता है? असाइन और रीअसाइन। रीअसाइन each object to the cluster to which the object is closest। अब ऑब्जेक्ट के पास जाओ और चेक करो कि वो इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। इस वजह से closest based on its distance from the cluster centroid। ठीक है, और ये करने के बाद फिर स्टेप 3 क्या होता है? अपडेट द क्लस्टर सेंट्रोइड।
फिर से पहले की ऑब्जेक्ट साबित कर लो। तो हमने इसमें हमारी केस में पहले की ऑब्जेक्ट को 3 क्लस्टर में डाला है। अब आप क्या कीजिएगा, 3 क्लस्टर निकालिए आपने। अब आप फिर से हर ऑब्जेक्ट को जाएंगे और देखेंगे कि वो कौन से क्लस्टर के सेंट्रोइड को सबसे ज्यादा नजदीक है। उसके बेसिस में आप हर ऑब्जेक्ट को नए क्लस्टर में फिक्स रखेंगे। अब आपका क्लस्टर अपडेट हो गया तो सेंट्रोइड भी अपडेट कीजिए। चलो ठीक है, तो अब वापस ये मैं बनाऊंगा लैब क्लस्टर, लैब ऑब्जेक्ट एंड लैब सेंट्रोइड, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। चलो आप ऑब्जेक्ट बनाइए 22, ठीक है। चलो पहले सेंट्रोइड से 22 9 और 12, पहले 22 लगेगा, दूसरे में लगेगा 12 लगेगा, बराबर है। अच्छा अब ये तीन को छोड़ के नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पता है सबसे ज्यादा किसको होगा 50। ये तीनों वैल्यूज को इनिशियली ने 3 क्लस्टर में डालेंगे। अब मुझे हर ऑब्जेक्ट को चेक करना है, हर ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि वो कौन से सेंट्रोइड को सबसे ज्यादा नजदीक है। तो 15 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है बताइए, 15 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 12 परफेक्ट। तो 15 आ जाएगा 12 का थर्ड क्लस्टर, 15 यहां आ जाएगा। 10 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 9 के, तो वो क्लस्टर नंबर 2 में आ जाएगा। देन 27 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 22 को, तो वो फर्स्ट क्लस्टर में आएगा। 35 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 22 को, तो फर्स्ट क्लस्टर में आ जाएगा। 18 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 18 22 के साथ 4 है, 9 के साथ 9 का डिफरेंस है, 12 के साथ 6 का डिफरेंस है। 18 सबसे ज्यादा किसके नजदीक है 22 के, ध्यान दीजिए। 36 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 22 के नजदीक है। 11 किसको सबसे ज्यादा नजदीक है 12 के नजदीक है। तो ये मेरे पास मेरे क्लस्टर में ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिए। हां या ना, समझ में कैसे किया? यस अच्छा अभी सेगमेंट नहीं निकालिए, अब ये क्लस्टर में नहीं दिखा है, ये तीनों निकालिए सेगमेंट में। ये तो तीनों क्लस्टर में है, इनके नेम क्या है प्लीज, चलिए इनके नेम बताइए। Okay, फिर आएगा 27.6 9.5 12.67। अच्छा क्या ये प्रीवियस सेंट्रोइड को सेम है क्या? आर दे सेम एज प्रीवियस सेंट्रोइड? नो करेक्ट, ये एल्गोरिथम लिखिएगा, एल्गोरिथम क्या कहता है। अच्छा आई थिंक नाउ स्टेप 1.3 अपडेट द सेंट्रोइड एंड स्टेप 4 क्या कहता है, रिपीट स्टेप्स 2 एंड 3 until there is no change in centroid। तो उसको तब तक अपने को करते जाना है जब तक डिफरेंस ना के बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। चलो तो क्या ये सेंट्रोइड कौन से डिफरेंस है? हां डिफरेंस है सर, डिफरेंस है सर। तो क्या कीजिए आप समझ बराबर। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 2 इज इंटीग्रेशन 1, नाउ एडिशन 2। तो इसको स्टेप 1 अब ये एक मिनट बता रहा एक चीज, जब मैं ये ऑब्जेक्ट फिल कर रहा था these objects were fused using this, now we have updated centroid, so यहाँ पे अब मेरे को क्या मिलेगा, now we have cluster, now we have object and we have centroid new, so cluster 1 cluster 2 cluster 3। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जाएंगे नहीं, these objects will be filled using what, using this centroid। आई होप इसे ऑब्जेक्ट में जाइए, इसे कैसे जाइए, अब सारे ऑब्जेक्ट्स लिखिए, पहला ऑब्जेक्ट 22, चलो 22 कहां जाएगा centroid 27.6, चलो 22 कहां जाएगा सेंट्रोइड मेरे पास है 27.6 9.5 एंड 12.67। 22 इन तीनों में से किससे नजदीक है 27.6 के नजदीक है, 22 क्लस्टर 1 में आएगा। 9 तीनों में किसके नजदीक है 9 9.5 के नजदीक है, तो क्लस्टर 2 में जाएगा। 12 तीनों में किसके नजदीक है 12 12.67 के नजदीक है, तो 12 में आएगा। नेक्स्ट 15 किसके नजदीक है बराबर, 15 12.67 के नजदीक है, यहां आएगा। 10 किसके नजदीक है 10 9.5 के नजदीक है। नेक्स्ट 27 किसके नजदीक है, वो तो इसके नजदीक है। नेक्स्ट 35 किसके नजदीक है, वो तो इसके नजदीक है। 18 किसके नजदीक है 27 के साथ लगभग 9 का डिफरेंस आएगा, इसके साथ करीब 8 का डिफरेंस आएगा, इसके साथ 6 का डिफरेंस आएगा। 18 आ गया, पहले 18 कहां था क्लस्टर 1 में था, अब ऑब्जेक्ट 18 कहां आ गया क्लस्टर 3 में आ गया। ओके 36 कहां आएगा ऊपर आएगा, 11 कहां आएगा 11 आएगा इधर। So I hope now you understood how we have reassigned the objects to the specific cluster. Yes or no? Yes or no? Now calculate the centroid. Help me. Help me calculate the centroid. चलो चलो एक बार बताइए तो ले तो 1.67 से पास में क्या होगा 12.67 के साथ लेंथ चलेगा 1.67 जाएगा ना, और ये वाला 1.5 जाएगा ना। नाउ मैं बताओ ठीक है, ये सेकंड नहीं, ये सेकंड चलो अब देखो बताओ मैं सेंट्रोइड पर बताओ। अरे और टाइप करो तो मैं सेंट्रोइड करेगा इंटरनेट सेंट्रोइड करो अरे तो नहीं है सेंट्रोइड। यस हेलो हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड 30 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 15 आएगा। नाउ पॉइंट मेरे पास है 27.6 और 30 9.5 10 पर है। तो वन मोर इक्वेशन स्टेप 3 iteration 3 चलो इक्वेशन 3 सॉल्व करते हैं। कम ऑन we have clusters, we have object and we have centroid 1 2 3 मेरे ऑब्जेक्ट्स हमने लिए 22 9 चलो बताओ और इक्वेशन कितना आएगा कौन है भी बोलो किस ऑब्जेक्ट में किस ऑब्जेक्ट में देखेगा अपने सेंट्रोइड क्या 30 10 15 चलो ठीक है 20 आ जाएगा 20 आ जाएगा और भी जाएगा बराबर तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 20 आ जाएगा 20 को लेगा 30 आ जाएगा 30 के नजदीक है 36 के नजदीक है। अभी 9 आ जाएगा 10 आएगा 10 आ जाएगा 10 आएगा 11 आ जाएगा 10 आएगा 12 12 बनेगा 12 से 15 3 का डिफरेंस है 12 से 2 का डिफरेंस है 3 आ जाएगा बराबर नहीं 21 12 हो जाएगा सॉरी 12 हो जाएगा 15 का 3 का डिफरेंस ठीक है। इधर क्या इसके बाद 15 15 नहीं आएगा 18 15 चलो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है we get value like 32.6 here you get 10.5 here you get 18.6 again not same as the earlier one step 4 that is fourth iteration. So now we are using centroid 32.6 10.5 and 18.3
we are going ahead with 4 dimension. Left cluster, left object, and we have centroid. Cluster 1, cluster 2, and cluster 3. So help me, 27 आएगा. 27 अपने को भी आएगा. 27 is closest to 32. 35 obviously यही आएगा. 36 भी यही आएगा. 9 यही आएगा. 10 यही आएगा. 11 यही आएगा. 12 यही आएगा. 22 8 12 यही आएगा. 15 यही आएगा. 18 यही आएगा. मेरे cluster चेंज होंगे, centroid चेंज नहीं होंगे. Now we will stop. तो देखिए क्या होगा last step. Repeat step 2 and 3 until there is no change in the centroid, and here we get no change in the centroid. We do not have any change in the centroid. So मेरे पास कितने cluster तो given step was what मेरा input था. मेरा input क्या था? 22 9 12 15 10 27 35 18 36 11. We have 3 clusters. T was 3. So we have 3 clusters. Cluster 1, cluster 2, and cluster 3. Cluster 1 will have 27, 35, 36. Cluster 2 will have 9, 10, 11, 12. And cluster 3 will have 18, 15, and 22. This is my output. Yes. I hope everyone is happy. Please solve. यहाँ पे आपको 2 minutes. Jल्दी. We have to talk about also. Okay, jल्दी. हम जब कहेंगे there is no change in the centroid, तो इसका मतलब क्या होगा कि algorithm has converged. आपको obviously मेथोडोलॉजी समझ आ गई. अब centroid के हिसाब से हम फिर से पूरा स्टेप रिपीट करते हैं, इटरेट करते हैं हर ऑब्जेक्ट से, और अब हम ये देखते हैं कि as per the updated centroid, again we will check if the object falls into which particular cluster, and we keep on doing this. I hope everyone is definitely done, and we also understood the algorithm. Okay? So अब मुझे बताओ इसके एडवांटेज क्या होंगे? एडवांटेज क्या लेगा? कि बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एल्गोरिथम है. हम सिंपल मीडियन निकाल रहे हैं. तो सिंपल कैलकुलेशन की मीन निकाल रहे हैं, नहीं स्ट्रेस नहीं है, ओवरहेड नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन और इजी टू इंप्लीमेंट है. अगर आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? हमने मीन इज सेंसिटिव टू व्हाट काउंट लिया था. जब हम मीन निकालते हैं बेटा, इट इज सेंसिटिव टू व्हाट? बताइए. मीन इज सेंसिटिव टू व्हाट? हां, अरे भाई बोलिए, बोल रहे हैं आप. मीन जो होता है बेटा, सेंसिटिव टू व्हाट होता है? क्या चीज सेंसिटिव होता है? Come on. बोलिए आगे बोलो. चल. Mean is sensitive to what? चलता. I'm using outlier. Perfect. Extreme values. Perfect. तो इसका मतलब निकालना पहला है कि this approach is sensitive to outlier. Mean फटाक से चेंज हो जाएगा. अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्लस्टरिंग बेसिक जब प्रॉब्लम है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच है. क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच है. ये अनसुपरवाइज्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको ये पहले से पता नहीं होता है कि हम कितने क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि हमको पहले से पता नहीं होता है कि हम कितने क्लस्टर बनाने जा रहे हैं. लेकिन ये क्या होता है? एक क्लस्टर बनाना है. यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आप कितने क्लस्टर बनाओगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए. ये यहाँ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. तो इसलिए हियर initially number of clusters must be known, and this goes against the concept of unsupervised learning. This goes against the concept of unsupervised learning. Is that clear? लेकिन एक और डिसएडवांटेज, इस एल्गोरिथम को हम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना मुश्किल है. क्यों क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट करना मुश्किल है? मीन निकालना है. मीन निकालना है. आप बोलो सर मीन निकालने क्या प्रॉब्लम है? अभी आपने हमको ऑर्डिनल में क्या सिखाया था कि यू कैन ऑलवेज गिव द रैंक. हेलो मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है. ओके नाउ मेरे को इसका दूसरा डिसएडवांटेज, हां सही है. इसका दूसरा डिसएडवांटेज है ना, इसका क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं. फिर बच्चे बोलेंगे क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? फिर बच्चे बोलेंगे लास्ट एग्जांपल आपने शुरू किया था ना, यहाँ पे आपने एबीसी जो कि क्लासेस हैं उनको 1 to 3 ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन 1 to 3 ग्रेड है तो ग्रेड यहाँ 3 का मतलब ए है, 2 का मतलब बी है. with 3 और 2 का मतलब 3 को 5 2.5. so here 2.5 will not make any sense. Here 2.5 will not make any sense. इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूं कि इसका डिसएडवांटेज तीसरा हम ये लिखेंगे. This cannot be used for classification. Even when मैं आपको डॉक्यूमेंट में समझाऊंगा, उसको देता हूं. Even when ordinal value gets converted to rank, the median in such case will not make any sense. अच्छा, और क्या हो सकता है? बेटा इसका और दिक्कत क्या है? देखिए प्लीज. मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है. मैंने कितना क्लस्टर बनाने को 3. मेरे को नंबर ऑफ क्लस्टर पहले से पता होना चाहिए. अगर आप ये मीडियम वाला है, अगर आप इस अप्रोच से हमारे क्लस्टर बन रहे हैं, यू कैन ऑलवेज चेक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर है. मतलब 1 2 3 4 3 क्यों नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर है बेटा? क्यों नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलर है? क्योंकि हम मीन यूज कर रहे हैं. हम मीन यूज कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सिमिलर मिलेंगे. तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक क्लस्टर बहुत बड़ा हो और दूसरा क्लस्टर छोटा हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक क्लस्टर बड़ा हो यानी उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और दूसरा क्लस्टर छोटा है उसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसे केसेस में हम के मींस यूज नहीं कर सकते. ऐसे केसेस में हम के मींस यूज नहीं कर सकते. तो यू आस्क मी क्वेश्चन, सर ऐसा कब होगा? सर ऐसा कब होगा जब हम चाहेंगे कि एक में ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक में कम. बेटा जैसे कोरोना टाइम मेरे कोरोना टाइम रोज 1 लाख ऑब्जेक्ट होते थे. बस समझो 20 लाख रोज चेकिंग होती थी. अगर 20 लाख रोज चेकिंग हो रहा है और 1 लाख पॉजिटिव आ रहे हैं तो मेरे पास 2 क्लस्टर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो एक क्लस्टर में 19 लाख लोग हैं जो कि नेगेटिव हैं और एक क्लस्टर में 1 लाख लोग हैं जो कि पॉजिटिव हैं. तो if we desire to have such unbalanced cluster, if we desire to have such unbalanced cluster, then k means is not useful. तो देखिए हम डाटा सेंस here mean is used so all the clusters have almost same number of objects. If we want one cluster to have more objects, when I say more, I mean to say many times more as compared to other, this approach cannot be used. I hope everyone is okay with this series. algorithm यहाँ पे दिया हुआ है मैंने. कोई कंफ्यूजन किसी को?
थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मैं नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं निकालने की वजह से क्या होगा, आप अभी केस देखिए, आपके जितने क्लस्टर होंगे उनमें लगभग सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमारे केस में 4 3 4 3 तो लगभग सिमिलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे क्लस्टर बनाना चाहता हूँ, जैसे एक में 10 लाख ऑब्जेक्ट है, एक में 1 लाख ऑब्जेक्ट है, यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा है क्लस्टर में। अगर मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं केस का यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है? यस नो यस क्लासिफिकेशन। अच्छा क्लासिफिकेशन बेटा, हम इसको क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या कर सकते हैं, आप मीन कैसे करोगे, मीन कैसे करोगे, जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिखा होगा ऑर्डिनल ये यहां पे आउटपुट क्लास ए बी सी ए, अब ये ए बी सी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, अगर मैं आउटपुट इस तरह से क्लासेस है मीन कैसे कर पाऊंगा, ऐसे केस में मीन नहीं कर पाऊंगा। बस मेरा ये तो हम इसलिए मीन को हम क्लासिफिकेशन के लिए इसमें यूज नहीं कर सकते, जहां हमारे पास ऑर्डिनल वैल्यू डिस्कस है। ओके ओके चलो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा तरीका है के मिडॉइड अल्गो। अब इसको आप ध्यान रखना, आप मेहनत करेंगे, हम के मिडॉइड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज़ के मींस इज sensitive to outlier. So यहाँ पे अगर इस partitioning algorithm is partitioning based algorithm where instead of means हम mean use करेंगे, middoids are used to represent the cluster. वहाँ cluster को कौन represent करता है, mean value of the object of the cluster, यहाँ middoid value represent the cluster. Now it is more robust. It is more robust to noise, हम जिसको outlier भी कहते हैं, और outliers. What is middoid? पहले क्वेश्चन से middoid क्या होता है? Middoid is defined as the object within the cluster. It is an object. अच्छा बात सुनिएगा, के मींस में मीन का वैल्यू निकालते हैं, तो जरूरी नहीं जो मीन सोचे मीन आया 30, but 30 which is a mean which is centroid may not be the object. Centroid मेरा object नहीं, मेरा object 30 नहीं है, n object है, 15 object है, और हमको जैसे 32.6 is centroid, but we do not have object with value 32.6, n.5 is a centroid, but we do not have object with value 10.5। मतलब जब हम के मींस कर रहे होते हैं, जो हमें centroid मिलता है वो हमारे object लिस्ट में हुआ, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम middoid की बात करते हैं, तो middoid एक object होता है बेटा, जब हम middoid की बात करते हैं तो उस लिस्ट का बहुत सारे object में से एक object होता है, तो middoid is defined as object within a cluster whose average distance to other objects in the cluster is minimal. तो बेसिकली इसका मतलब दैट इज इसका होता है विथिन द मैं एग्जांपल विथिन द क्लस्टर द मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट इज मिडॉइड। क्लस्टर के अंदर जो सबसे मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बाकी सब ऑब्जेक्ट से कम हो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बाकी सब ऑब्जेक्ट से क्या है कम हो। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल जैसे अगर मेरा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबसे सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिसका सब डिस्टेंस लगभग सेंट्रली लोकेटेड कौन है, वो है द मिडॉइड टू बी कोड एज मोस्ट सेंट्रली लोकेटेड। Let us try to solve it. तो हमने मिडॉइड देखे, इसमें अलग अलग काफी केसेस आएंगे, तो अलग अलग हम देखेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर समझ में आया क्या बात की अभी, हम यहाँ पे मीन यूज नहीं करेंगे, मीन आउटलायर का प्रॉब्लम है, मीन हमने अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं। let's see how we solve this middle example, let's see how we solve this middle example. Okay, ये एग्जांपल बहुत अच्छे थे, let's consider the same example, let's consider the same example using k-middle example, create clusters using k-middle। ठीक है, मैंने लिखा 2 ये कोई और फॉलोइंग, तो ये नंबर क्लस्टर में करें और फॉलोइंग b = 10 2 4 12 3 तो मैंने यूज किया था 20 30 11 25। चलो सॉल्व करते हैं, फिर इसको लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। मैं आपके स्टेप लिख रहा हूं, ठीक है, मैं स्टेप लिख रहा हूं एंड देन ठीक है ओके ओके मैं अल्गो और स्टेप को साथ लिख रहा हूं। ओके चलो ओके देखो, तो एल्गोरिथम के मिडॉइड इनपुट लिखा बेटा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट और के क्लस्टर्स, तो बेसिकली नंबर क्लस्टर्स में ओके ओके तो यहां पे we have d as set of objects में नाम दिया और k is set of clusters number of clusters। ठीक है, अल्गो क्या कहता है, पहला स्टेप 1 arbitrarily select a object as initial methods। पहले तो मिडॉइड मीडिया पार्ट ऑफ द लिस्ट, तो arbitrarily select k object as initial methods, ये स्टेप नंबर 1 है। तो चलो यहां पे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, यहां करेंगे लेट स्टेप 1 पहले को लेट n इक्वल टू पहले को हम लेते हैं 10 2 the initial methods। यस, सो नाउ क्लस्टर्स ये मॉडल के लिस्ट को क्लस्टर बनाते हैं t1 t2, तो पहला है 10। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्ट देखिए 10 तो 10 C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, तो इन दोनों को छोड़ के हम बचे 4 तो 4 किससे लेंगे बेटा, और डालेंगे डिस्टेंस के हिसाब से हो जाएगा सेकंड क्लस्टर में, 4 2 के नजदीक है, 12 के नजदीक है, 10 के नजदीक है, 3 के नजदीक है, 2 के नजदीक है, 20 10 के नजदीक है, 30 10 के नजदीक है, 11 10 के नजदीक है, 25 10 के नजदीक है। ये दोनों क्लस्टर होंगे यूजिंग इनिशियल मेथड्स। ये बेटा ये दोनों नए क्लस्टर बन गए यूजिंग इनिशियल मेथड। नाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट निकालेंगे कैसे, कॉस्ट निकालेंगे कैसे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्लस्टर विद ऑब्जेक्ट्स नियरेस्ट टू द मेथड। ओके अच्छा, अब हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट क्या है, इट इज समेशन ऑफ ऑल द कॉस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट i माइनस मेथड। ठीक है, चलो तो पहला क्लस्टर पहले क्लस्टर कौन है 10, दूसरे क्लस्टर कौन है 2, तो पहले क्लस्टर में 10 10 को छोड़ दो, तो मेरा 10 10 0 को छोड़ दो, तो मेरा 2 छोड़ दो। ओके इसको ध्यान दो, 12 10 2 प्लस समेशन ना, तो ये होता है ऑब्जेक्ट और मेथड का डिफरेंस उसको सम कर लीजिए, ऑब्जेक्ट और मेथड का डिफरेंस उसको सम कर लीजिएगा, तो 10 10 2 लोग आ जाएगा, 12 10 is 2, 30 10 is 20, 20 10 is 20, 20 10 is 10, मैं ऐसे कर दूंगा, मेरा फॉर्मूला दिया
Okay, 12 minus 10 is 2, 20 minus 10 is 10, 30 minus 10 is 20, 11 minus 10 is 1, 25 minus 10 is 15. Plus second cluster, 4 minus 2 is 2, plus 3 minus 2 is 1. You will find the cost as 48.3. 51 is the cost of this particular cluster created using the initial method. Please repeat now. Please repeat the command. Cost partner से सेट करें क्लस्टर 1 का ये मिनट है क्लस्टर 2 का ये मिनट है हर ऑब्जेक्ट अपनी मिनट से कितना हुआ उसका सम तो ये क्लस्टर 1 है ये क्लस्टर 2 है C1 and C2 तो C1 का ऑब्जेक्ट 10 12 minus 10 2 20 minus 10 10 ऑब्जेक्ट माइनस मिनट का सम फॉर ऑल क्लस्टर ठीक है 30 minus 10 is 20 11 minus 10 is 1 25 minus 10 is 50 similarly 4 minus 2 is 2 3 minus 2 is 1 okay so step cost है 51 right now step 2 cost calculation पहला इक्वेशन अब क्या करेंगे कितना है मेरा पहला फर्स्ट अच्छा तो अभी हम फर्स्ट मिनट निकालते हैं हां मैं बोल रहा हूं फर्स्ट मिनट स्टेप 2 फर्स्ट मिनट अभी हम फर्स्ट मिनट निकालते हैं फर्स्ट मिनट है बराबर 10 और 2 मिनट से अभी हम थर्ड मिनट निकाल रहे हैं 10 ठीक है उसमें इक्वेशन 1 अब क्या करेंगे अगला तो क्या करना है चल रहा है आगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एज इनिशियल मेथड ठीक है चलिए हमने अब क्या करना है रिपीट करना है स्टेप 2 क्या कहता है रिपीट क्या करना है सर असाइन ईच नॉन मिडॉइड ऑब्जेक्ट टू द क्लोज्ड मिडॉइड क्लोज्ड में जो इनिशियल लिया हुआ है देन सेलेक्ट अ नॉन मिडॉइड O and M मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉन मिडॉइड कंप्यूट यहां से सॉल्व करना होगा समझ लो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट OJ if compute the cost not of object that is compute the cost if अगर मैं रिप्लेस करता हूं compute the cost if any object OJ is replaced with a non midoid and M अगर रिप्लेस करने के बाद cost reduce होता है if cost reduces then replace OJ object OJ with an M इसे क्या मिलेगा to form new set of k midoid और ये कब तक रिपीट करना है repeat until no change इसे नीचे देखिए कब तक रिपीट करते हैं हमारा मींस चेंज होना नहीं है ना ये क्या करेगा पहला आपको भी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट को इनिशियल मिडॉइड ले लो हमने वैसे ही हमने 10 को इनिशियल मिडॉइड लिया और उसके साथ हमने कॉस्ट निकाल लिया ठीक है अब क्या करना है अब आपको एक क्या करना है असाइन नॉन मिडॉइड को मिडॉइड कोई भी नॉन मिडॉइड ले और उसको ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना शुरू करो और कॉस्ट निकालना शुरू करो तो ये बोलो समझ नहीं आ रहा ओके लेट्स टेक वन एग्जांपल तो आपसे मैं लिखा चलो मैंने क्या हमारे पास 2 मिडॉइड 10 और 2 ये 2 मिडॉइड है अब देखो एक नॉन मिडॉइड से इस मिडॉइड को रिप्लेस करना 10 नॉन मिडॉइड 4 12 3 20 30 11 25 ये सारे नॉन मिडॉइड है ना these are O and M these are non midoids and these we are considered as initial midoids ओके तो चलो ठीक है ये कहता है कि नॉन मिडॉइड को मिडॉइड की जगह असाइन करो मेरे पास 2 मिडॉइड 10 2 लेट्स वी फर्स्ट वर्क ऑन मिडॉइड 10 तो हम पहले मिडॉइड 10 करते हैं एडिशन 1 क्या कहता है रिप्लेस चेक पहले check if 4 can replace 10 so 10 OJ O क्या है O and M नॉन मिडॉइड 4 चेक करो क्या वो OJ को रिप्लेस कर सकता है क्या कैसे होगा सो नाउ मिडॉइड से क्या होगा 10 की जगह क्या होगा 4 2 अगर मेरे 4 2 मिडॉइड हुआ न्यू मिडॉइड तो अपडेट कैसे क्या होगा अच्छा अपडेट कैसे होगा छोड़ो आपको टाइम पास करना है कैसे बात सुन रहा अब तो ये मैंने किया और एम मिलता समझ गया क्या कैसे करोगे ओ 0 4 2 अब मेरे पास क्या होगा 10 10 4 देखो अब मैं क्या बोला कि चेक करो कि अगर आपने 10 2 की जगह 4 2 लिख दिया क्यों 4 लिया सर क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स में से 10 और 2 तो मिडॉइड थे तो नॉन मिडॉइड में ये सारे हैं एक एक करके सारे नॉन मिडॉइड सब्स्टिट्यूट करो फिर से समझो एक एक करके सारे नॉन मिडॉइड सब्स्टिट्यूट करो कॉस्ट अगर ये कॉस्ट वाली कॉस्ट कम है मीडियम कॉस्ट कहते हैं इसे मीडियम कॉस्ट कहते हैं तो अगर अपडेट कैसे क्या होगा यस मिडॉइड कॉस्ट अपडेट कैसे कॉस्ट सो मैंने लिखा 4 2 तो कॉस्ट क्या होगा चलो कॉस्ट क्या होगा भाई कैसे क्या करेगा मेरा रेडी चल मेरे फोटो बस कैसे फटाफट नॉन मिडॉइड कैसे करेंगे ना भाई ये मिडॉइड एक और से बताओ ये प्लॉट से एंड ये होगा 10 -4 2 तो रेडी तू छोड़ो 4 भी मिडॉइड 10 ये होगा 10 ये होगा 4 में से 4 so 10 का 4 से डिस्टेंस 9 -4 प्लस 3 से होगा 2 से होगा 3 -2 20 से होगा 4 से होगा 20 -4 30 से होगा 4 से होगा 30 -4 11 से होगा 4 से होगा 11 -4 20 से होगा 4 से होगा 25 -4 फिर क्या कैलकुलेट करेगा फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वही किया था फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वहां पर पता चला क्या क्या पहले कैसे साइन डिस्टेंस के हिसाब से यहां मैंने क्या किया मैंने कैसे बनाया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से फिर मैंने कैलकुलेट किया फिर अगर मुझे पता करना है क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू दीस टू स्टेप कैन वी डायरेक्टली कैलकुलेट द कॉस्ट यस कैसे सर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स नियरेस्ट मिडॉइड तो देखो 10 और 4 डिजिट n इन दोनों से 10 का 4 इसका 10 ऑब्जेक्ट 4 वाला होगा तो जहां मैं 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं समझो वो सारे ऑब्जेक्ट 4 वाले क्लस्टर में है वो क्लस्टर में है जिसमें मिडॉइड 4 है जहां मैं 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ये सारे ऑब्जेक्ट उस क्लस्टर में होंगे जिसका मिडॉइड होगा 2 इसका कॉस्ट कितना है इसका कॉस्ट है 85 इसका मतलब जब मेरा मिडॉइड 10,2 था मेरा कॉस्ट था 51 ये जब मेरा मिडॉइड 10,2 था मेरा कॉस्ट था 51 मैंने मेरा एक मिडॉइड कहता है एक नॉन मिडॉइड को मिडॉइड से रिप्लेस करो सर मेरा 2 मिडॉइड 10 भी है 2 भी है पहले 10 काम करते हैं इसलिए लिखा था फर्स्ट मिडॉइड 10 आइटेशन 1 10 को रिप्लेस करो तो 10 2 ठीक है मैं 4 से रिप्लेस करूंगा सर अगर आप 10 को चेक इफ 4 कैन रिप्लेस 10 अगर मैं 10 को 4 से रिप्लेस करता हूं तो मुझे नया मिडॉइड मिलता है मुझे नया कॉस्ट मिलता है कॉस्ट क्या है 85 क्या अपडेट करेगा क्या अपडेट करेगा या ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 51 इट इज नॉट लेस देन 51 सो 4 विल नॉट रिप्लेस 10 आइडेंट समझा अब 10 किसे चेक करते हैं check if what was 12 if 12 can replace 10 तो मेरा क्या होगा 12,2 मेरे कॉस्ट बताना चालू कर दीजिए आप यस कॉस्ट क्या होगा इसका कॉस्ट क्या है आपको इसका कॉस्ट आएगा 10 किसने दिया है 12 क्या आएगा 2 2 तो मिडॉइड ले लो 4 किसने दिया है 2 के तो आएगा 2 12 मिडॉइड 3 किसने दिया है 2 से 20 किसने दिया है 12 से 30 किसने दिया है 12 से
11 किसने दिया 12 से डिफरेंस 1 25 किसने दिया 12 से you get answer is 45 45 is less than 51 so इसका मतलब 12 is a better midpoint than 10 12 is a better midpoint than 10 so we have new midpoint as 12,2 we have new midpoint as 12,2 and now new cluster initial was 10,2 we found the better so new cluster C1 C2 12,2 मेरे ये कॉपी ठीक है 12,2 चलो कहाँ जाए 10 कहाँ जाएगा 12 के नजदीक है 2 midpoint है 4 2 के नजदीक है 12 10 के नजदीक है 3 2 के नजदीक है 20 10 के नजदीक है 30 10 के नजदीक है 12 के नजदीक है 11 के नजदीक है 25 के नजदीक so we got two new clusters so अब मेरा नया क्लस्टर क्या हो गया है 12,2 yes and we got two new cluster कॉस्ट इसका हमको पता है कॉस्ट क्या हमने पता किया है कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया था 45 है so अभी हमने क्या कहा सबसे पहले लिखा मेरे इनिशियल 2 मिनट के 10 को मैंने पहले चेक किया क्या 4 नया मिनट हो सकता है जो 10 को रिप्लेस करेगा नहीं क्या 12 नया मिनट हो सकता है जो 10 को रिप्लेस करेगा हां ओके अब मिनट 2 मिनट हो गया 12 नाउ विल चेक फॉर 3 नाउ चेक 3 को 10 से रिप्लेस करेंगे चेक इफ 3 कैन रिप्लेस पहले मिनट बात करें रिप्लेस 12 हमको चेक करेगा 3 से 12 को रिप्लेस कर सकता है m क्या हो गया 3,2 कॉस्ट निकालिए चलो फटाफट कॉस्ट निकालिए देखो समझ क्या कर रहा हूं मैं हेलो अभी ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा 3 से चेक करना है फिर 20 से चेक करना है फिर 30 से चेक करना है फिर 11 से चेक करना है फिर 25 से चेक करना है ये सब हमने किससे किया फर्स्ट मिनट से ये सब करने के बाद हमको मेरा करेक्ट फर्स्ट मिनट करेक्ट फर्स्ट मिनट मैंने शो किया फर्स्ट मिनट इज 10 सेकंड मिनट इज 2 देन व्हाट वी डिड इज फॉर एवरी नॉन मिनट we will keep on replacing with the first minority and if the new cost is less than the earlier cost we will retain that minority and we continue जैसे 12 replacing 10 gives me less cost 45 with 10 the cost was 51 so हमने 12 नहीं better तो अब जो नेक्स्ट मिनट आएगा 3 जो नॉन मिनट हमको उसको चेक करना है कि क्या वो बेटर मिनट है वो 12 यानी पहले ही पोजीशन को रिप्लेस करके चेक किया जाएगा तो ठीक है आप देखिए 3 का आपका कॉस्ट आएगा 7 + 1 + 9 + 17 + 27 + 8 + 22 ये 51 आएगा which is greater than 45 so 3 cannot replace 12 next हम 3 का 20 check for check if 20 can replace 12 so हमें क्या हो जाएगा 20,2 मैं कॉस्ट क्या करेगा कॉस्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 8 + 2 + 8 + 1 30 - 20 10 + 9 + 5 you will get 43 oh which is less than 45 so इसका मतलब 12 is a better 20 is a better midpoint than 12 therefore 20 is better midpoint than 12 so therefore new midpoint is 20,2 so updated cluster क्या आएगा C1 C2 अपडेटेड क्लस्टर मेरा सबकी डिस्टेंस चेक कर लो 20 तो और 2 तो मेरे मिडॉइड हैं 12 2 से 20 के नजदीक है 30 20 के नजदीक है 25 20 के नजदीक है और 8 2 के नजदीक है 20 बाहर डिफरेंस है और 2 से अच्छा डिफरेंस है 4 3 11 अब ये नए मिडॉइड्स तो आपको पता चला ये ज्यादा बेटर आंसर हमने शुरू किया था 10,2 हमको करना है कि 10 की जगह कौन सा सबसे अच्छा होगा हमने देखा 10 से अच्छा 12 था फिर हमने देखा 12 से अच्छा 20 है सो 20 हमने चेक कर लिया अब क्या चेक करेंगे 20 का कौन है 30 11 25 ये भी चेक करना है सो आप क्या करेंगे दैट वाज द फोर्थ फिफ्थ में क्या करेंगे चेक इफ 30 कैन रिप्लेस 20 so new midpoint is 30,2 या कॉस्ट आएगा आपको 8 + 2 + 10 + 1 + 10 + 9 + 5 आई डोंट वेरीफाई दिस वी गेट 45 और इसका कॉस्ट कितना 43 था सो ग्रीन होता है इट इज नॉट लेस देन 43 सो 30 कैन रिप्लेस 20 30 हो गया नेक्स्ट क्या 30 बात है 11 ओके एग्जॉस्टिव है मुझे पता है चेक इफ 11 कैन रिप्लेस 20 so new is 11,2 and the cost will be 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 19 + 14 that will be 47 it is not less than 43 so 11 cannot replace 27 और लास्ट में क्या 11 25 चेक करो check if 25 can replace 20 so name midpoint set at 25,2 और cost निकालिए बेटा cost आएगा आपको 8 + 2 + 10 + 1 + 5 + 5 + 9 you get cost is 40 which is less than 43 so 25 is better midpoint than 20 oh so now updated midpoint क्या होगा updated midpoint will be 25,2 and updated cluster will be C1 C2 और 25 होगा तो 25 आएगा 20 25 और 30 इसके नजदीक होंगे बाकी सब यहाँ रहेंगे 12 4 3 11 मेरे सारे नॉन मिडॉइड का हो गया so first midpoint is sealed so we start our first midpoint as 10 so first midpoint is finalized that is 25 ठीक है यहाँ से शुरू किया था देखो यहाँ से शुरू सबसे पहले मेरा मिडॉइड फाइनलाइज हुआ था 10 2 दो मिडॉइड है दो मिडॉइड क्योंकि दो क्लास बोला क्यों दो मिडॉइड लिया क्योंकि दो क्लास बोला है तो मैंने रैंडमली दो मिडॉइड लिया 10 2 अब मुझे पता करना है ये जो पहला मिडॉइड है नेक्स्ट मिडॉइड कैसे पता चलेगा जितने भी नॉन मिडॉइड है एक एक करके सब्स्टिट्यूट करके कॉस्ट निकालो लास्ट में जो सबसे कम कॉस्ट देगा तो इन सब में जब मैंने 25 एज अ फर्स्ट मिडॉइड लिया तो मुझे आंसर आता है 40 which is the least we started with 51 cost see when first midpoint is 10 the cost was 51 from 51 we reached 45 from 45 we found 43 and from 43 we found 40 so our first midpoint is finalized step 3 now अब सेकंड मिडॉइड 2 मैंने अज्यूम किया था सेकंड मिडॉइड 2 मैंने अज्यूम किया था अपने को कंफर्म करना है क्या वो 2 सबसे अच्छा है now for second midpoint that is 2 consider all non midpoids if it can replace तो अभी आपको सी मैं आपको इसका आंसर दूंगा तो अब पहला क्या था 25 2 ग्राफिक्स है 25 2 मेरा अपडेटेड मिडॉइड है तो 25 2 छोड़ दिया मेरा एलिमेंट कौन सा बचा ये मेरा कैसे 25 और 2 ये छोड़ दे सो 10 बचा चेक इफ 10 कैन रिप्लेस 2 तो मैंने निकाला 25,10 ये मेरा 10 होगा फिर आपको कॉस्ट लगा दिया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको कॉस्ट निकालिए यू गेट कॉस्ट एज 34 यू गेट कॉस्ट एज 34 is 34 greater than 40 yes is 34 greater than 40 yes so इसका मतलब नाउ अपडेटेड क्या हो गया it is less than 40 तो जब मैं 25 कर रहा था मेरे को क्या लग रहा 40 अब मैंने 25 में पूरा टेस्ट किया 34 है सो नाउ मैं अपडेटेड मिडॉइड कितना होगा 25 10 ठीक है अब मैं चेक करूंगा कि 10 की जगह मैंने क्लस्टर अपडेट कर रहा हूं फिर समझ आ जाएगा so you can cluster C1 C2 you can cluster अब क्या चेक करूंगा चेक if 10 हो गया 4 4 चेक if 4 can replace 10 10 4 replace 10 तो क्या होगा 25 4 इसका आपको कॉस्ट आ जाएगा 34 आ जाएगा 34 is not greater than 24 जाने दो फिर हम क्या चेक करेंगे चेक if 4 के बाद कौन है 4 के बाद है 12 if 12 can replace 10 सो अब यहाँ हो गया 25 12 मेरे को कॉस्ट मिल जाएगा 40 40 अच्छा नहीं जाने दो 34 34 से अच्छा नहीं है रीडिंग अगर नया वाला इससे कम होगा तो ही हम समझ करेंगे पहले 34 था 4 के साथ भी आया 34 यस अब हम चेक चेक इफ 3 कैन रिप्लेस 10 सो m will be 25 3 इसमें आपको कॉस्ट 36 आएगा ये नहीं चलेगा 34 नहीं है फिर हम चेक करेंगे चेक इफ 20 कैन रिप्लेस 10 सो मेरा m आएगा 25 20 यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे यू गेट सम कॉस्ट
ये मैंने सॉरी का 20 समझ आ जाएगा, डिफरेंस आएगा. It will definitely not be less than 34. ये समझ आ रहा है. तो 6 let me check if 21 30. If 30 can replace 10 तो 10 हो जाएगा 25, 30 अगर कैलकुलेट करेंगे. नो आप बात कीजिएगा, मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा, कंपटीशन में एग्जॉस्टिव है. खाली दो क्लासेस क्लियर करना है. दो क्लासेस बोल हर एक को दूसरे के साथ रिप्लेस करके बाहर रिपीट करना पड़ेगा. ओके, इसका कॉस्ट आपको भी नॉट लेस देन 34 आएगा. और फाइनली हम क्या चेक करेंगे बेटा, चेक इफ 11 कैन रिप्लेस 10. इसका आंसर 11 36 आएगा. इस नॉट लेस देन 34. सो फाइनल आंसर क्या आएगा? सो हम क्या होगा 25, 10. इज दैट क्लियर? नाउ वेट, सुनो. अब क्या है 25 दिस इज एडिशन 1 ना. ये देखो एडिशन 1, सॉरी एडिशन 1 लिखना चाहिए. एडिशन 1. अब जैसे मैंने 10 से चालू किया, एडिशन 1 खत्म करके मैं 25 लिख आया. एडिशन 2 वापस 25 लिखा, वापस देखो क्या आता है. It will go on repeating. It will go on repeating. So this is first addition. Repeat the 25 first addition. It first addition के बाद में if you go on go, this is NP hard problem. Actually, you know, completely exhaustive. I know. ये वाला कितना रहेगा? और या सी के बगैर, या सी के बगैर. कंप्यूटर के लिए क्लास होगा मैं बहुत जीरो के पोजीशन में रखा. उसमें नॉन दे सकता हूं. अगर कॉस्ट का कॉस्ट ये चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, आपको रिपीट करना है. So this is I have solved this complete one equation just equal है. तो फर्स्ट सॉल्व किया. तो जस्ट कंक्लूजन और इस मैं डाटा में अपनी Okay, so this is going to take 10 to 10 to. अब 10 के बाद 10 था. फिर मुझे 25 10 25 अभी 2 के बाद 10 है. सो अब एडिशन मतलब 1 25 10. ये एडिशन मतलब अब 25 एडिशन 2. इसके बाद 10 है. ये एक्स 1 and 10 फिर 10 के बाद 10 ये एक्स 1 x 2 and then एडिशन 3 कितने परसेंट है and this is class. So give me completely exhausted है. आप मैंने इसको सॉल्व नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? ओके. एनी क्वेश्चन? फाइन. ओके. चलो. So let's give make it 200 okay? Good everyone, take care. Bye.